हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर से आप सबका स्वागत है मेरी लाइव स्ट्रीम में। जो भी गाइस देख रहे हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आज देखेंगे भाई, कुछ राड़ा हो ना जाए। देखते हैं दोस्तों। L like A, L like A, L like A. Sansa रही है? Everyone is there, Vijay. अच्छा बाहर देखा क्या क्या बोल रहा है। कोई नहीं। रॉक्सेट ने बोला अगर नेगेटिव हुआ जो जज के पैनल में बैठा है ना उनको फेल है, ठीक है। इसलिए मैं रीजन को बता रहा है। जो भी गाइस देख रहे हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आज देखते हैं क्या सीन होगा। अभी कुछ भी ऐसा स्टेप मत लो जो हमारे खिलाफ जाए। मैं आपको एक आईडी से देता हूँ। पूछना कि उनकी हेल्थ कैसी है अब, ठीक है? हाउ इज ही? खाना चाहिए सर आपको? आज जितना मक्खन लगा सकते हो लगाओ। मक्खन किसको? मजाक कर रहा हूँ, कोई मक्खन नहीं लगाना, बी प्रोफेशनल। जो है एक्सेप्ट करना है हमें, ठीक है? डिपार्टमेंट शुरू हुआ था तो इफ वी गो डाउन, वी गो डाउन टुगेदर। अरे चिल मैन विल स्पीक ना, विल आल्सो सबको चांस मिलेगा ना बोलने के लिए। सो 5 or 6 back candidate on forms. ये पे सुनो, सबको मिलेगा ना चांस बोलने के लिए। आई होप सो, मेरे को आइडिया नहीं है। Because I have some points to raise. आई हैव अ लॉट ऑफ पॉइंट्स टू रेज। कि देखो, और अगर if किसी ने they आर are किया तो मैं नहीं डबल नहीं आर if they are करूंगा। going to against DEA, सुनो, चीफ बदल है, असिस्टेंट चीफ बदल है, ऑफिसर्स न्यू ऑफिसर्स आर कमिंग। उन्हें क्या पता है भाई प्रीवियस चीफ क्या किया है, और समझ रहे हो। मैं एक बात बोलूं, न्यू ऑफिसर्स कोई भी नहीं है जो बोलने वाले हैं। वो वही ऑफिसर्स होंगे, यू आर ओनली द वो वन वही राइट, ओल्ड ऑफिसर्स होंगे ऑफिसर्स। जिनको हमेशा शुरुआत से ही थी प्रॉब्लम। और हम भी बोलेंगे भाई तो क्या किए पीडी जो रीजन में। हम एज डीई एज अ फेडरल एजेंसी हम पीडी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है? जो हमें पीडी ने पॉइंट्स दिए थे, याद है उस टाइम ऊपर जब वो बोल रहे थे कि प्रोटेक्शन के लिए आ जाते हैं? ऑब्वियसली वी एज अ फेडरल एजेंसी वी लेस ऑन एजेंट्स, वी एक्सपेक्ट पीडी टू प्रोटेक्ट अस। दैट्स इट, उसका कोई पॉइंट ही नहीं बनता। और जहाँ तक रही वो कोड रेड वाली बात, हमें भी पता है कि एलेक्स बर्न्स ने कितनी बदतमीजी से बात की थी अच्छा आके इफ पहले, लिसन इफ तब DA उसको gonna वैसा रिस्पॉन्स close, मिला था। DA gonna close, what about us? I'm not going PD for sure, DE or nothing. नहीं, if anyone wants to join PD can they, वो भी पूछ। if anyone wills to वो join तो पीडी PD, ऑप्शन देगी ना, जिस मतलब मेरे को पीडी के जो हाव लग रहे हैं, दे आर नॉट इन सपोर्ट ऑफ अस। हम मीटिंग के लिए रेडी थे, पीडी से सामने से कोई रिस्पांस नहीं आया। वी वर रेडी फॉर द मीटिंग। see if DA gonna close, if we get an offer to move PD, I'm gonna go। अब पहले वो था, श्योर, व्हाई नॉट? if if DEA closes और जो आप अभिषेक जी, क्या हाल है?
क्या करे न क्या करे, ये कैसे मुश्किल है। हेलो हेलो सुमित दुआत, कैसे हो? अरे बिग फैन भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जो भी गैस देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अच्छा, what do you think will change in the formals income? I don't think so. You're looking good in this test. क्या नहीं, हाल है बिकॉज सुमित? फिर से जज पूछेगा भाई डीओए क्या है, डीए रखा है, डीओए कर जाए, वो एक बात देख लो यार, इतना छोटा पॉइंट जज नहीं मारेगा। एटलीस्ट आई वुड एक्सपेक्ट दैट। पीडी जरूर बोलेगी हाँ हाँ ही में, बट जज नहीं बोलेगा। बिकॉज इवन जज नोस, जब वो बजट बोलने जाएगा तो हम यूनिफॉर्म की बात उठा देंगे। यूनिफॉर्म कभी दी नहीं हमें। जहाँ तक बात तो बोले सही है रिटर्न्स सर। की बात, वी नो अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अरे वी कैन डिफेंड आवरसेल्फ जब मैन। डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश हुआ था, वी गॉट आवर व्हीकल्स आफ्टर लाइक 3 to 4 वीक्स, नॉट लाइक एट द लिसन डे ऑफ लिसन डिपार्टमेंट चिल अडॉप्शन। करो, वी हैव, you have अरे the we have a points, lot right? of points, we got a We, lot of points, but let's make some sensible points. ये जो मैं अभी points बोल रहे हैं sensible नहीं है. We कौन want सा? to make sensible points on what the works we have done. हाँ, that's We do right. not need to counter him on like shitty points. मास्क उतारो रस्टी, मास्क उतारो। Yeah, Rusty, please take off the mask. Yeah. हमारा रॉक सर क्यों बैठ गया साइड में? हेलो, वैसे नहीं है क्या? हेलो हेलो। अरे हमारे रॉक सर क्यों कोने में जाके बैठ गया बैठे भाई? हुए होंगे यार, बैठे हुए होंगे important comes. थक गए होंगे खड़े सो खड़े गए बैठे। लगता है। भाई कितना देर वेट करेगा भाई, अरे जल्दी लास्ट डे गेम, अरे हो गया था जज। अरे ये लास्ट डे थोड़ा क्या हुआ? દિવસમાં Please સમજાશે I'm hearing. તમને. Okay. એટલે સ્ટ્રીમનો લાસ્ટ ડે ને ભાઈ, પણ થાશે. I think the convoy is coming. બીજી કોઈ ગેમ્સ ટ્રાય કરવી પડશે મારે, या બીજું કોઈ हाँ, સર્वर आगे કદાચ. I'll wait outside, ठीक है? आप लोग talk to me before you leave. Sure, Sure. sure. What's your name by the way? But thank you so I'm much Alfred. Give you a नवीन number. Okay. I'll call joining you. I'll If give you you leave my also, I'll stream. call you. yeah. जो भी गाइस देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों. लास्ट डे नहीं, स्ट्रीम नो लास्ट डे नहीं, Yeah. स्ट्रीम तो रोज रेगुलर જ આવશે. आप हर कौन रोज से आएगी इसमें मेरी स्ट्रीम. विजिट बट दूसरे गेम्स भी मैं I'm a ट्राई field करूंगा. reporter. Who's your boss? Richard. Is he available? No, he's gone. Right now it's only me, but we might have Okay, some more Naveen. people. Okay. एक स्लॉट रखो है सर उस पे, ड्राइवर क्या क्या कह रहे हो? ड्राइवर का स्लॉट रखो ना विजिट में। ठीक है, ठीक है. अरे हाँ बट अब मुझे भी पता है, बट उसका कुछ अनाउंसमेंट आया उसकी वजह से शायद. देखते हैं आगे क्या अनाउंसमेंट आती है, उसके हिसाब से रहेगा ब्रो. अच्छा, listen, we'll wait outside because if judge comes you can salute him from outside. इनको भी जो बुला भी लेना गाइस तब देख रहे जज हैं आ लाइक एंड जाए। मानिया, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों. मानिया और when judge is coming closer, मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ रेली पे, इनको बुला देना रॉक से। ओके ओके. ऐसे बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर बैठो, बाहर चलो, बाहर। मास्क को डाल देती है अजय. मास्क उठाओ, बाहर चलो, बाहर बाहर बाहर। ફોર્મ ભર્યું? અરે ફોર્મ જ ભરવાનું છે પણ પેડ છે લગભગ. નવીન પેડ. वाह भाई वाह. अरे मान आओ यार, लात मारेगा खाते आते ही सीधा સમજો છો? ओपन अप बूम बूम. ओए ओपन अप लेट्स गो बूम बूम.
क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? अरे It's okay, it's okay. I can do this. I can do this. अच्छा रुको एक करता हूँ. यार ये करना અરે चाहिए વાંધો નથી, ફોર્મ ભરવામાં વાંધો નથી બ્રો. जज के सामने ही એમાં किया શું करो, છે ये કે ये પેઇડ છે, પેઇડ મતલબ क्या था ये बोल થોડુંક बताए क्या પેમેન્ટ પ્રોબ્લેમ સમજ. ओए અરે એ हमें તો કોઈ वहाँ पे વાંધો નહીં, कैमरा એ તો है થઈ જશે એડજસ્ટમેન્ટ. પણ પછી શું છે કે નવી ગેમ્સ પણ ટ્રાય કરીએ તો વધારે બેટર રહે ને. હા 99 નું છે. अरे सर आप विजन लिस्ट में શું છે કે સ્ટાર્ટિંગમાં सर તો आप થોડુંક ऐसा हमारा इंटरव्यू ले सकते हैं आप इंटरव्यू કહી ले તો सकते ના हैं શકાય પણ અમારે થોડુંક तो आओ अपना रिपोर्ट तो એડજસ્ટમેન્ટ मतलब બી થઈ स्टार्टिंग જાય. तो करो ना क्या होगा? प्रीव्यू तो करो प्रीव्यू तो करो एक मिनट शांत, एक मिनट, ये बताओ हमारे साथ हो એટલે બીજું કંઈ मैं નથી. तो हमेशा इंसाफ के साथ हूँ. આ તો શું છે કે જે कौन से મારા वाला कि डीए हटना चाहिए कि नहीं से- हटना चाहिए? आई डोंट थिंक हटना चाहिए बिकॉज हर चीज के लिए होनी चाहिए ना प्रोटेक्शन. वही आप वही हट वही जाओगे तो पूरा शहर मतलब गांजा ही पीता प्रोटेक्शन रहेगा और जरूरी पता है नहीं क्या. सर, सही बात. हाँ पुलिस बैंक लूटेगी कि बैंक लूटने वाले को पकड़ेगी. કેમ કે શું છે કે હવે લાસ્ટ ડે હોય હમણાં સેલેરીનું બધું એનું થોડુંક એડજસ્ટમેન્ટ પ્રોબ્લેમ છે. જોશું ફ્યુચરમાં પાછું થશે. ज्यादा लीक नहीं होता है ये अभी हम भी श्योर नहीं है। और अगर ये जज के आने से पहले एक दो देना है कोड तो बताओ मेरे को. हम જોઈએ पहले ટ્રાય देता કરીશ બીજું ए જોશું. बंदे ओए देते हैं सुनो कोड। सर, शायद ओपन बंदे मेरे को जो भी जैसे आ रहा guys दिलवा दो देख सारी रहे न्यूज़. आओ सर माइक खोलें आप ટ્રાય हम करेंगे अगर उतना नहीं पैसा भाई. होता तो मैं डीए में होता. हम कोड Anyway, देंगे क्या सर आप बोलना? बताएं हाँ एक सेकंड सर. ओपनिंग स्टेटमेंट दीजिए. मैं तो क्लोजिंग अपनी स्टेटमेंट हम 100% देने की कोशिश करूंगा बट देखते हैं अभी. जब आप बोले एक्शन तो हम बोलेंगे हाँ सर हमारे कैमरा में ही माइक्रोफोन है क्योंकि अकेला सब कुछ रुको, करना रुको, पड़ रहा है. हाँ, ओ कोई नहीं ओके, कोई नहीं बोलो. कोई नहीं हाँ हाँ। अभी आप Love you, दोनों bro, अपना thank नाम you, bye. बताइए पहले. माई सेल्फ स्पेशल एजेंट अजय ठाकुर और हाँ तो सर आज हम इसलिए वेट कर रहे हैं क्योंकि हमको जज की तरफ से नोटिस आया आज जज आने वाला है, आज देखते हैं. हमारा डीओजी पैनल वगैरह होगा तो उसका शायद हमारा डिपार्टमेंट का रिव्यू होगा एक तरीके से तो देखते हैं क्या हम अपने जो भी रिपोर्ट सबमिट करते हैं उस पे हमको वैसे कुछ प्लस पॉइंट मिलते हैं इन्होंने या थोड़े फिर जज जो भी हमको फैसला सुनाएंगे हम मानेंगे उस चीज़ क्या को। बोले आप. अभी के लिए ये सस्पेंस बना हुआ है कि हम लोग आगे चल के काम कर पाएंगे कि नहीं क्योंकि आज हमारा जो रिव्यू होगा उस पर हम सब कुछ डिपेंड करता है। Let's see what देखो happens. भाई मैं यही We are बोलूँगा hoping for the best. कि 999 है वो एक मिडिल क्लास जो मतलब ये ये मजबूत आई है गेस हमारे उनके लिए परफॉर्मेंस क्योंकि कुछ हमने ज़्यादा है. पिछले कई दिनों में जो हमने बाकी शानदार इनका है भाई, परफॉर्मेंस इनको करके भी दिखाया है सर्वर में यहाँ पे इन सिटी हमने मतलब काफी पैसे कुछ लगाने पता पड़ते लगा हैं ये चीजें जो डेवलपर्स भी को देने, वो सारी तो चीजें वो अपनी जगह पे confidential है सही है. और मैं हमको ऐसा बहुत नहीं सारी बोल रहा हूँ चीजें कि ये पता लोग चली गलत है related to बट drugs। बस अगर वो चीज़ बाहर आती है और हमको उन बंदों को सब चीज़ें कर रहे हैं तो इसमें एक पीडी को भी और हमको भी एक बहुत सी जगह लंबा हाथ तो डॉक्टर और मे बी लीजन भी इससे पकड़ा जा सकता है। एक बार जज को कॉल करो ना, 10 बजे अभी नहीं आया वो। तो जो भी गैस देख रहे थे ना कि सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों. देखिए सर ये तो अभी हम होप भाई फॉर द जज बेस्ट क्यों नहीं जो आया आपने अभी एक तक? हमारा मोटो सुना है उसके ऊपर है। लेट्स सी अगर कुछ ऐसा कुछ होता है तो अभी हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। 9:30 बजे वाले जज आने वाले थे. चलो कोई नहीं. और जो भी हमारा डिसीजन होगा आफ्टर द जज का जो भी स्टेटमेंट आएगा। आफ्टर वाल तो हमारे जो डॉक्टर देंगे जो चीफ है। हाँ स्टेटमेंट स्टार्टिंग मेरा है। अरे तुम चुप रहो यार तुम अभी वो तो आफ्टर उसका है होप फॉर द बेस्ट करो अभी। हाँ ये यार ये इनका इनके साथ छोड़ दो। हाँ वही उसी को डिमांड बता रहे हो वो तो जस्ट जो स्टेटमेंट आएगा उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है भाई तुम शांत रहो यार अभी। हाँ वही ये ऑप्शन को बताएंगे और ऑप्शन
अरे आ गए सर क्या वो हम्म डीओजे आ गए क्या? नहीं आया नहीं आया जज जा रहा है, जज जा रहा है, आ रहा है, आ रहा है, जज जा रहा है। चिल्ला क्यों जीजा आ गए हैं? प्रशांत बाहर चलो, चलो चलो बाहर जीजा आ चलो। गए क्या बोल रहे हो? आ रहा है, जज जा रहा है भाई, कॉन्वे देखो, कॉन्वे आ रहा है। कहाँ से कॉन्वे दिख रहा है तुमको? हमको तो दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा। इधर लाइफ इन्वेडर वाह। हैं? ऑफिसर को बोलो भाई उठाओ उनको। अरे यार तुम चुप रहो विजय भाई, तुम शांति रखो, ठंड पाओ, ठंड पाओ यार। ये एक तो इतनी तेज आवाजें बोल रहा है हर जगह। रुको मैं कोल्ड ड्रिंक्स देता हूँ इनको। हाँ इनको आ थोड़ा जाओ ठंड इधर दिलाओ। आओ। माथे पे रखो एक कोल्ड ड्रिंक। वहाँ बताओ विजय न्यूज Guys, के stand सामने बोल रहा है inside for हमको, now. हमको पीडी के अंदर पीडी में जाना है। कह रहा मेरे को क्या करना है, विजय न्यूज वाला बोल रहा है। अंदर जाना है क्या? अंदर आना है, एवरीवन कम इनसाइड। आ गए सर, जज आ गए। करने की क्या जरूरत है? वही अरे तो। चीफ है, डीए के चीफ है। कोई सी नहीं। अच्छा अच्छा डीए के चीफ है। हाँ हमें तो पता ही नहीं। भाई अभी तक मनिया पता नहीं। मनिया भाई तुम कहाँ सदमे ये में रहे रहे ना क्या, ये गांजा रहे कौन ये सा रहे फूक रहे हो? ये रहे ना। ऐसा लग रहा है मनिया हमारे मेरे पास, डिपार्टमेंट में ही लोग गांजा मेरे फूक लेफ्ट रहे में हैं। आ जाओ। अरे कोई आ थोड़ा जाओ एसएमजी लेके मेरे लेफ्ट। थोड़ा सिक्योरिटी धीरे थोड़ा धीरे दे रही है बात। क्या चाहिए? सिक्योरिटी हाँ एसएमजी है ना मेरे आ पास। गए हम। ऐसे स्वागत करेंगे हम जज अरे का। रे रे शांत रहो आ गए क्या? आ गया बात है। आ गए आ गए। एसएमजी निकालो भाई। सब गन्स अंदर। गन्स अंदर सर, गन्स अंदर। For the last time. अंदर अरे नहीं प्लीज वो देख प्लीज गाड़ी कम। साइलेंस। अरे ठीक है मनिया भाई, ठीक है। हाँ ठीक। अरे सर उस जज दिन पता स्टोरे में है। तो आता है भाई पूरे। अंदर और होता है मन्या भाई, समझ रहे हो? अंदर क्या क्या होता है मालूम नहीं किसी को। जज पूरे टोरे में तो आता है। तुम उधर ये रखोगे ना लात वाले की आराम से। चलो शांत रहो, भी आ ही रहे होंगे शायद से अंदर। अरे अंदर नहीं थी अंदर नहीं। शांति। चुप एकदम चुप। तो एक आ गया दरिंदा। आ गए आ गए आ गए। हे शांत है। रॉक्सल आ गया। आइए रॉक्सो। आप बुलाने दो। गुड इवनिंग सर। Can you guys just wait here Good evening for a sir. while? Good evening, sir. I'll Okay, okay, just sir, okay. see where we should do the review meeting and then we'll take Sure, it sir. there. ओके। Where's chief? अबे सारी मीटिंग क्या इंग्लिश में होगी क्या? को नहीं बुला रहे भाई, हमको चीफ I'll be कंसिडर there, करते। okay? I think you need नहीं says PG. रुकने के लिए बोला, रुक जाओ। I'll be just back. ऑलराइट सर। अरे आगे गए। अरे विजय अजय सर हमारे ऑफ हैं, बाकियों की नहीं है। पीछे से बोला किसी ने। कि इंग्लिश में होगी क्या? चिल मारो, कोई नहीं कर। ठीक है अब इंग्लिश नहीं आती। कोई नहीं हम समझा देंगे तुमको। ठीक है बाद में समझा दीजिए। जो भी गैस देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आज होगा इंग्लिश वर्सेस हिंदी। देखते हैं कौन जीतेगा भाई। सारा इंग्लिश में बोलने वाले हैं ये लोग। जो पीडी है वही वो है। मैं तो बोल दूंगा सर मुझे हिंदी आती है सर, मैं हिंदी में रिप्लाई दूंगा। विजय, अगर विजय। सही लगे तो बोलना। थोड़ा सा अपना गला कम करो। उनके हाई कमांड्स को ही लेके आए ये लोग, तो आप समझ रहे हो? हाँ समझ रहा हूँ। गला कम करो अपना विजय थोड़ा। गला कम करो सबके सब। कम है कम। भाई राणा अरे उसमें धीरे से बोलो, गला वो कम देख- करो क्या होता है? उधर देखियो वो गुस्ताव किंग खड़ा है। कौन है वो? कम करो यार तुम, और मैं थोड़ा और धीरे बोलो। अरे कम है धीरे बोलो। हाँ ऐसे बात करो। कौन है? रामा है और अरे रॉबर्ट यार है। विजय भाई तुम। ये कम भी है भाई। अरे थोड़ा धीरे बोल लो भाई, कानों में बोलो, कानों में। चिल आउट चिल। रिव्यू मीटिंग है लेकिन बॉयज इतने चिल आउट पहुंच ले रहे हैं एकदम। और दिस इज द पावर ऑफ टीए। टीचर एफआईडी। कोई किसी का मजाक नहीं करेगा, ठीक है? डन हो गया। फ्यूचर एफपीआई। ओके यस हाँ ऐसे बात करते हैं भाई।
बात करने का। देखते हैं भाई क्या। मैं तो पहले ही बोला था। हाँ? बोलो। तुम खिसकाना बंद करोगे तुम लोग साले इतने मुश्किल से ये बार बार खिसका रहे हो बताओ। शॉर्ट से बकचोदी कर सकते हैं नहीं हाँ पागल हो गया तुम। बोलो, स्वॉट है वो। भाई तेज देंगे भाई। इसमें एक वो जानने वाला लग रहा है मुझे। नहीं मैं ये कह रहा हूँ तुम्हें अगर वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते दैट डजंट मीन तुम उनकी रिस्पेक्ट ना करो। वी आर ऑन टॉप ऑफ एवरीबॉडी। वी डू Yes, we रिस्पेक्ट know that. पीपल। We know that. We know that, sir. We know that. We know that. पानी नहीं है यार। स्टेट वर्सेस फेडरेशन होने वाला है बॉयज। We know that. Let's see. क्रेटू सर का क्या डिसीजन लेगा? नहीं सुनो स्टेट वर्सेस पीपल हुआ है, स्टेट वर्सेस ईएमएस हुआ है, स्टेट वर्सेस डीओजे हुआ है, अभी स्टेट वर्सेस फेडरेशन होने वाला है। भाई अभी इससे पहले भी लोग मेरे को तोड़ भाई ये पता इंग्लिश नहीं क्या वर्सेस ही हिंदी प्रॉब्लम भी है होगा इनको शायद। मेरे। प्रशांत सर प्रशांत सर ये पीडी वाली है पिछली बार भी मेरे ऊपर केस ठोके थे। बोलो बोलो बोलो। रुको वो हार गए थे सर, हम जीते थे। आई थिंक अरे यार वो भी होगा। उन्होंने जो केस प्रेस किए थे ना नेता उसमें भी नेता नहीं नेता थे। आ जाओ सर आप लोग आ जाओ। हाँ ठीक बुला है रहे ठीक आपको है अंदर। ठीक है Officers one by one. Yes, sir. Come inside. राणा अगर उसमें चीफ हुआ, मेरा हो जाएगा। आगे जाइए चीफ प्लीज। लेट्स गो। जो भी गाइस देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अरे हम बाकी हैं। Anybody else remaining? आप कितने लोगों से अलावा कोई और आया? नहीं। हाँ? Shall we allow people without camera? This one noting down some, important Yes, absolutely. bite. Yeah, please. Yeah, SWAT officers You also can. stay here. Yeah, SWAT officers नहीं तो वो बाहर खड़े खड़े वैसे भी बोल देंगे। I mean किसकी वो करें? बैठिए आप लोग। कोई नहीं सर बैठ। Already in. एजेंट के हाँ टाइलर और एलेक्स को सामने वाले रूम में आ जाओ बोलो प्लीज। यू टू हैव सामने वाले रूम में। वी कैन सिट देयर। जज खड़े हैं, खड़े रहो। इधर ही बैठ जाओ ना अभी से। जज खड़े हैं। अबे ओ जज खड़े हैं, अभी खड़े रहो सबके सब। आई थिंक वी कैन गो टू देयर। नहीं वहाँ नहीं बैठ सकते वो पैनल मेंबर लग रहे हैं मेरे को इसके लिए। आवाज कम करो। आने के बाद मेन कोर्ट हॉल बंद कर दे। इट्स नॉट पब्लिक हियरिंग राइट। मेन डोर हम ब्लॉक कर देंगे। जज खड़े तो हमें भी खड़े रहना पड़ेगा भाई। कौन? नहीं पिछले कुछ दिनों से यूनिफॉर्म में है ये। नो नॉट द फर्स्ट टाइम। नहीं ऊन का गोला मंगवा दूं, स्वेटर बुनेगा यहाँ बैठ के? ऑफिसर वीर आपको पता है ना आप कहाँ बैठे हैं? यस सर, सॉरी सर, मैं वो तो कम से कम उस जगह की रिस्पेक्ट रख लीजिए। सॉरी सर। You should be. भाई शेरिफ भी ऐसे भाई, हरकतें कर रहा बताओ डांट सॉरी बोलना दिया। पड़ रहा उसको। सबके सामने डांट भाई। दिया भाई। आई हाई कमांड दे भाई। अजय भाई। एम तो है। अजय भाई। जज तोड़ रहा है बे। धीरे बोलो धीरे। यारी कुछ। क्या भोसड़ी के बोल रहे कुछ मुझसे? कोई दिक्कत नहीं है, शांत रहे। ठीक है। उधर खड़ा हो। ये माने आराम से था। धीरे बोल दो धीरे बोलो। क्या बोलना है? शांति से बैठना है। ठीक है। Only we are the one who is standing. Rest all are sitting here. Anything that you'd like? Oh, they are already here. Sorry, my bad. I didn't see. Officer Oak, I am guessing you will be the person who will be representing on the behalf of DEA. Yes sir. Along with हाँ me तो आप इधर आ प्रशांत is जाइए। there. अब जाना।
अच्छा ठीक है, तो आप इधर आ जाइए, प्रशांत इधर आ जाएंगे. As many DE officials who can sit here, please sit here. Sure, sir. Only 5 can come. 5 ही आ सकते हैं वैसे. बाकी इधर आ More जाइए than जितने. 5, then just sit over there. Sit here or. Stand over here, no worries. So I'll just introduce you to the panel, Officer Rock. I've tried to keep it as fair as possible. One more. उधर चले उधर चले. There's Igor Yadav. आगे There's चलो Officer JB. मान्या. There's Chief Manya. James Bond. There's Veer Suryavanshi. There's the head of HR, which is Ryan Knight. There's Officer Rana and Officer Robert as well. So this will be the panel. What we are here to review is the actions of DEA and how they have helped in neutralizing बोल रहे हैं drugs यार. so far from the city. And basis that we will either continue or discontinue the DEA department, and the decision will be taken today itself. आप बाकी के जो DEA officials है वो आगे chairs पे आके बैठ सकते हैं उधर. So what we'll be doing that each one of us will be asking a question one by one. Right? हम कोशिश करेंगे कि overlap ना करें. कोशिश ये भी रहेगी कि हिंदी में conversation हो पूरा. ठीक है? We'll keep the पहली language जो है first language वो हिंदी रखेंगे. जी सर. एंड सबसे पहले मैं आपने जो रिपोर्ट भेजी है वो सबके पास ऑल दीज इन तो सबके पास अच्छा है. है भाई, हिंदी में सो बोल रिपोर्ट दिया. उन्होंने को पढ़ लिया. Highly confidential report that needs to be reviewed. आर यू डाउटिंग ऑल ऑफ दीज गाइस? I do because a few of them were been. I don't. Okay. Then यस, ये पैनल है और पैनल के साथ तो रिपोर्ट शेयर करनी पड़ेगी ना, अदरवाइज उनको पता कैसे चलेगा कि आपने क्या करा क्या नहीं करा. Sure, sir. If you trust on them, I do trust on them in that case. This As long as is it's like all my about most judge. trusted officials, PD officials which are there in BCSO या LSPD या SASP. And you can trust them as well. Yes, sir. तो आप शुरू कीजिए with an opening statement कि how has DA helped so far, and then we'll ask you questions and try and understand कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है आज तक, and जो रिपोर्ट आपने शेयर करी है we might ask questions from that as well. Is Weasel News here? Yes, sir. Are you guys able to hear us? Yes, sir, clearly. Okay, great. मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सब शाउट करें, ठीक है? तो ठीक है सर. हाँ, प्लीज गो अहेड ऑफिसर रॉक. Yeah, regarding the incidents of all the drugs, we came to know specifically when I joined up the department that department was dealing in the specific field for weed, and that specific case was completely being neutralized when since we came to know that brothers who used to live at Pareto, they were the main producers. ऑफिसर रॉक. Sir, I have a problem in Hindi, so थोड़ा सा अच्छा, it you will have be a problem in Hindi. Yes, sir. ठीक है, कोई नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए. Yes, sir. So what I was saying that what we came to know that brothers were the main initial suppliers for all these feed that was being distributed all over the city, and we had a few incidents. In one of them, a raid was being performed before I joined up the department, and later on we also had a situation. We busted all of their holdings, and a proper report was being produced to the DOJ as well. Later on, we came to know 2 more drugs that were being that came to the city, specifically named as heroin and meth, and our units were determined in order to know the exact distribution from where it is coming, what are their sources and everything. And both the reports were being forwarded to DOJ. Regarding meth, the report was sent to you before you had an accident, sir. And regarding heroin, the report was sent today only. If it's not been forwarded to panel,
I can share it right away. Like it's already forwarded to you. Yes, sir. That's it. Yes, sir. This was. Okay. Anyone has any questions? I have a question, sir. I have gone through the report. There are mentioning of meth, there are mentions of the weed, meth, heroin. What are the evidences? Meth lab. There is no evidence regarding meth lab. कहाँ है meth lab? क्या है? कैसे दिखता है? Or else, As it's mentioned, we are investigating on that. It's only the only thing we came to know during our interrogation with one of the guys that they have access to a meth lab, and when we tried to go for further interrogation, the problem is that the guy who has the access to it is not ready to comply with us whenever we are going to get him, and whether we had asked for PD help, we both the units were unable to neutralize him at that period of time for further interrogation purposes. Both the people name who has the access to that meth lab are being mentioned in the report. I have a question too. Yes. yeah, sir. please go. As per your Proceed, investigation, sir. As per your investigation onto the person whose name is mentioned in the report, Hmm. under what circumstances that investigation was done? Under the circumstances of the law that was passed during the terrorist issue which we were having during that time, that was specifically named as martial law. Okay, so you were doing investigation at the time of martial law. Yep. Okay. So he might be under pressure, right, Mani Singh? Everybody who is what we say under interrogation is under pressure. If I keep you in a cell, lock that up, ask few questions, you will just be in that pressure, sir. Like you don't know what you will do. People cry as well in that cells. Yes. So you agree, right? So what I'm saying, Yep. he gave you information according to the report. He gave you information regarding meth Hmm. lab, correct? Yes. Whatever evidence you have, whatever he said, correct? Hmm. But there is no physical evidence. Are you guys able to hear them? मेरे को There आवाज is नहीं a आ रही. meth lab. It might be. We can say it might. There हाँ might be थोड़ा meth थोड़ा lab ठीक है because we यार don't. बोलो ना उनको, shout So कर दो. did I proved over there कि there is a meth lab? It's under investigation to be continued is always been written in my reports. I have a I think question. I answer. Yes, sir. Rock, how did you know, like, तुम्हें कैसे पता चला ये heroin के बारे में? Was there any investigation? As I said, read my report, sir. Before asking that, जी it's इसी मैंने already पढ़ी तभी mentioned. मैं पूछ रहा हूँ आपको. Yes, it's mentioned in regarding the case of Andy Was Roy. it before Bala's raid or was it after Bala's raid? Before Bala's raid, Andy Roy. Very much before Bala's raid, so heroin was found on Andy Roy. And जब आपने heroin like आपने पकड़ा होगा, is there any report? It Specific is. report? It is a warrant was also being asked during this situation on Eightfold, where ADA Jolly was also being involved in that interrogation. You can Yes, sir. have a cross question with him. आपको पता चला like heroin कैसे produce होती है and like, कौन बनाता है? Yes, we got the report from PD about this. No, by yourself. By yourself, like, we hold on a second. Let me answer it. We don't Hmm. have any kind of laboratory initially that was provided to us. So of course we have to be dependent on PD in order to know what exactly is the process of preparing that heroin. That will be my initial and final statement on that. On what basis Mani Singh was investigated in the process of drugs? We were already having suspicion, since they were also being involved in the case in which all of the brothers guys surrendered with like high amount of this weed, and later on from our internal sources, we came to know they do have access to meth. As we came to know, they are the ones who were supplying to different gangs. So
Of course, when we came to know that Mani Singh is around during that martial law period, and he was also having that mask, having a gun in his back, so we thought it's the best point where we can have a proper interrogation. So when you guys must have detained him or researched him, according to the evidence, you only got one bag of meth, as per the evidences you have mentioned in the report. Yes. So on that basis, you did an investigation at that time when he was caught. As I said, I also got an intel that they are the suppliers. So during that, when I was questioning him out, It was an I can. official intel, or it was from your sources? So we are a federal agency. We have too many sources, and we can't disclose. No one has the- said that Yeah. DEA is a federal agency. No one has said that. So stop No. calling yourself a federal agency. No one So, said sir, that DEA is a federal agency. So can you tell me what we are, sir? DEA For is my just an understanding. agency for a drug enforcement agency. It just Mhm. summarizes that. You guys need to focus on drug. No one has called out ever that DEA is a federal agency. That's not the case here in Los Santos. You might be thinking about some other cities and getting Mhm. inspired from there, but that's not the case in Los Santos. So what I was being told initially, I'm just telling it out that. I'm sorry, but you have been provided the wrong May information. I ask Yep. something? Mhm. Ryan, you need to be a louder, like bit Hello, louder. hello. Am I loud Yeah. enough? So yeah, as you said, as you said right now in front of the panel, that you saw a gun on his back, right? But Yes. in the same thing, there is a evidence provided, and there is just a pistol that you can see. Mhm. There's no class 2 or class 3 that could hang at the back. Yep. So you just said right now about having a gun. He had a gun at his back, and there's A just gun have his back doesn't mean he can have a holster in which he can put out a gun, sir. so he had That a doesn't mean ki if I'm saying a gun at his back means like a class 2 should be carried on. Like the way I am putting out a holster, I can put my class 1 firearm in it, which can be illegal. That can be also a case. For your better understanding, I just clear it out. All right, got it. Yep. Rock. Yes. There was a report Oh, no. from a lady, Diana Reeves, Mhm. कि आपने उनको एक धमकी दी थी कि आप उनको execute कर देंगे. Is DA not focusing on drugs? Yes, we are. But if our information are being provided to outsourcing, we were also investigating that case as well. What do you on mean by which your information is providing to outsourcing? Can you describe that and elaborate on it, please? So initially, Diana Reeves was an ex-DEA member who was hired by old Chief Cypher. She resigned recently, and she was also been involved in one of kidnapping situation of ours along with it. So where we came एक to सेकेंड, know. आप ये कह रहे हो कि एक पहले there was someone who was a part of DEA. Yes. And she resigned and she's now kidnapping DEA officials. Yes. She, according to our information, she joined one of an active gang members named Balas. Oh. Yes. Okay, great. So it was all about that. And do you have any idea how much information she has shared about and whatever information you had regarding DEA or any other investigations that you have done with Balas, and probably Balas could have shared it with all the other gangs? On that, a little bit, I cannot give out a full Can description I on that. enlighten on that? Yeah, sure, please go ahead. Yeah, so basically Diana Reeves was one of the earliest members of the DEA, and when it comes about her sharing the information, I don't know, she had some good friendships with those people of Balas. When she was off duty, she used to roam with them. Not pointing out on a personal life with the Balas guys, but definitely I got some intel from my sources, not to reveal them, that she has been continuously saying that the DA department is not working thoroughly. So most of the criminal activities related to drugs increased a lot throughout that time.
So, in short, let me be brief. So, when एक सेकेंड yeah, तो आर यू सेइंग प्रशांत दैट अभी मैं जज हूँ तो अभी मैं अपना काम कर रहा हूँ जी सर। तो अगर मैं इसके बाद रेड माफिया के लोगों के साथ जाके चिल करूंगा या वेंडेटा के लोगों के साथ जाके चिल करूंगा या बालास के लोगों के साथ जाके चिल करूंगा, दैट इज एब्सोल्युटली ओके? No, sir, that's not okay because you're part of a government agency, and you have a lot of word. hold You on a hold a second, lot of Prashant. responsibility to the state, sir. Hold on a second. So, initially, like when we assign agents, the main thing as a detective, what people you need to understand is to have a good relationship with all the people. So, in order to have proper information what's going around in the Officer city. Rock, but your relationship turned into someone who left DEA and could have compromised all your investigations. Sir, I totally agree on your point, but I was not the initial one who recruited her. And So are you the head of DEA right now or the highest ranking official in DEA right yes, yes, I am the chief of DA currently now? Whose at this responsibility position. is then? Yes, sir, it is my responsibility as of now. That's why we If were by having. chance tomorrow Robert is with Mhm. Legion, do you Mhm. think Chief James he will just say that I did not hire Robert, Veer did? No. I will be holding Chief James Bond accountable for it, right? For sure. Yeah, please Now go a ahead. question. Mhm. रॉब, ये जो रिपोर्ट है ये किसने बनाई है? मैंने बनाई है. आपने बनाई है, राइट? उसमें जो सेकंड ग्रुप है, Which group? उस Which सेकंड report? ग्रुप Which जिसमें group? आई मीन Two रेड्स. reports were being sent. Yep. ओके, there's one MATLAB. रिपोर्ट मेटला वाली, ठीक है, जिसमें जो कि सेकंड ग्रुप में एक नेम है मैडी जोकर. मैं कभी ना उस बंदे से मिला हूँ ना उसके डेटाबेस में लाइक उसका कुछ रिकॉर्ड्स है. That's mad. So that's the mean, thing. That's the thing. What yeah. information I get, I note it down. I'm not a like a person की Okay. जो मेरे को सुनने में आता है और जो Okay. चीजें पता चलती हैं, Okay. that's the only thing I act upon. Okay. Yep. I have a follow-up question to Judge Charles. You said, okay, even if you take, you were not aware of the hiring details of Diana Reeves, right? Do you have hiring details of ex PD, that is public defender? Sorry, can you repeat? एक मिनट है दोस्तों. Recently आप एक ऑफिसर को फायर किए Can थे. you speak in English, Rana sir? I'm a little bit having No, he has a in problem understanding. speaking in English. Yeah. Okay. Recently, you fired one of your employee, right? That I forgot his name. He was in public DOJ, ex DOJ too. Can you name that employee? That was Joey Gupta. Joey Gupta. Yeah, Joey Yes. Gupta. Were you aware of his hiring details? Yes, I was. While you hired, did we not inform you that he was involved in criminal activities before you after DOJ? He left DOJ and Did you guys have any reports on him? Yes, we have. I had checked on the MDT. I did checked on the MDT. Let me. Yep. Okay, Rock. Yes. Just said जो भी guys you देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब कीजिए only दोस्तों. have verbal evidences. People, what you have heard is the only evidence you have, right? Guys, continue. I'll be just back. Do you have any physical evidence On of any of the investigations you have ever done? Meth lab regarding or anything? regarding heroin or connection with brothers? Yes. Check the today's report. It's in the. एक मिनट दोस्तों.
But you did, right? Anyway. I have a You did trust a follow-up probable question, Doc. suspect. A probable suspect, no sir. It was a reasonable suspicion over there. हाँ तो but don't you think कि reasonable suspicion वाले लोग भी नहीं होने चाहिए? Sir, Just but asking sir, you a question. yes, just answering my question. He was our informer for a very long time. And Did you when inform PD about it? it was regarding? That he was your informer? No, I never like what we say, share information about my informers to anybody. Then why do you expect PD to cooperate with you? If you I'm don't, not- I'm not asking you to share it with everyone in PD. Huh? At least share it with the highest authority. At least share it with Chief Bond. For that, he needs to be present in the city. You can send him an email. How Sir, many times have you Just give me 1 second. Chief, are your emails blocked? Have you blocked? No. Is the inbox is open, right? Correct All me if the I'm wrong. transcripts and the emails are open. I come less to the city than Chief James. Just give me 1 second. Officer Robert. Yes, sir. How many times have Officer Rock sent you emails? 0. You guys don't exchange emails at all? No. You exchange 0 emails? Not 0. अगर उन्होंने उनको like कुछ pictures के आपको बारे में email पूछना भेजते हैं ना वो? जी, yesterday he sent me a picture. ठीक है. ऑफिसर राणा आपको ईमेल भेजते हैं ऑफिसर रॉक? रेयरली सर आते हैं. यस आते हैं ना. ठीक है. एनी अदर ऑफिसर्स जिनको ऑफिसर रॉक के ईमेल आते हैं? No, not me. Not at all. Not Judge. I feel. How do you expect people to help you if you don't want to help yourself, Officer Rock? If someone is not in the city, if you want me in the city, I am not there. You have asked me on email to come. Have I come? Yes or no? Yes, you did. Why couldn't you ask Chief Bonds for him to be present in the city? Sir, if one of the high commands are being present over here in this city, if I'm and everything to him, it's like I personally believe it should be communicated between them that I brought up that Agreed. information. Yep. Agreed. So did you provide that informer information to any of the high commands? Regarding informers, as I said, I don't share any of it. So then why do you expect PD to help you? How do you guys expect, why is your expectation is there that the PD should help you when you are not ready to share any information? And what if your, just give me 1 second. Yes. What if your informers get caught while doing a criminal activity and then they are sent to jail? Okay, if the question is about I'm not sharing out information to PD, all the information about Legion and about the cases were being shared to the CID department. I don't know why it was not being forwarded to other officers. My personal things are see, आपने अपने मैं आपसे एक सवाल पूछा है. Yes. प्लीज घुमाइए मत. आपने इन्फॉर्मर की इंफॉर्मेशन शेयर करी किसी के साथ पीडी में? Yes, जो informer मेरे को information share करता है, yes, I share it to CID people. You can have a word with Mr. Veer. He is in the panel. I do. Great. मैं ये कह रहा हूँ आपने अपने informer की ये बंदा मेरा informer है. No, I did. ताकि As I already cleared अच्छा, it many times. I don't. But what if अगर आपका informer ही criminal activities में involved है तो? Sir, जो भी guys देख रहे हैं like and subscribe कीजिए दोस्तों. there are like I don't know. There are like even people are there in the city who have done zero criminal activities and are ready to share out of the information. You're being a lawyer, Officer Rock. You're not answering my question right now. I am answering to your question, नहीं, sir. you're comparing the whole city. I am asking, what if your informer is doing criminal activities? I'm not talking to you about the rest of the city right now. So that doesn't. So he will be punished according to it. That doesn't mean I will. That's all. Yeah. So that means you will consider him as a criminal, right? Of course, I will consider him as a
department, I guess that's yes, teaching as a US Constitution and everything. So reason why I think he didn't email me or you just heard of them and then you noted it down. Yes, see, And you consider it that just as a proper okay. report for an investigation or getting a raid Okay, operation. I didn't ask for a raid. If you clearly read it, I wanna go ahead with a raid. It's just the thing, until my investigation is fully completed, I don't want any Can you civilian tell or me the any. difference between wanna go for a raid and asking for a raid? Sir, it was a confidential report, as I said in the initial basis, that it was for our own understanding that what things are being done in the department as of right now. And I noted that point down that yes, if we get upon that in the fully investigated that case, You we haven't answered my question, officer. What is the yes, difference between ask for a raid and what did you yet write of to chief? put out a Go for a raid. yes. Go for a raid and ask for a raid. In इसके short, बीच में आप difference बता दीजिए प्लीज मेरे को. कि मैं ट्रेड कर किस वे में आप जानना चाहते हैं? आपने अभी बोला ना कि I didn't ask for a raid. I mentioned that I want to go for a raid. Yep. इसके दोनों That statements के yeah, बीच में that difference क्या है? means in like what I used to meant over there, according to the differentiation, that if I get the evidences, I will ask for a ask DOJ to help me with the SWAT unit to seize that specific thing if I totally SWAT find unit? it. Why SWAT unit? Because because I don't have specialized equipments to go directly and seal that thing. That's why. ठीक है, okay. Counter please that, I continue with want the to rest. ask you, why did you then a few days back only there was some incident happened at Palito only. Mm-hmm. What was that situation? Can you brief us a bit? So there are many situations happened at Palito. Can you just recall it? There was a shootout Be situation between. specific, Mr. Officer. Yeah, there was a Please be little shootout specific. situation at Palito a few days back. Sir, Was we between have you and daily some guys there. situations. Can you just notify that date to me? I will. That Can I, Sheriff? Yeah, go ahead. जिसमें आप Alex Burns and Slade Hills. I'll tell the date once. Yep. Yeah. I have the date once. Mm-hmm. The date was 28th January. Yes. It was a gang-related shootout at Palito. You guys were present at the beach just next to the Palito highway, where I guess you were disrespectful to our officer Alex, if you remember. Okay. 28th January. And my question to that situation was that you just said that you would be needing SWAT for handling some tactical operations, for which you don't have specialized. But still, you can respond to someone's. You can respond to these kind of situations, and there can be shootouts. जो start हो जाते हैं, then you deal with that, but you don't have specialized equipments, you say, right?
You are just twisting out the statement. I'm not twisting out the statement. I'm You just did, sir. rephrasing the word which you said. You don't have those. Yeah, that is twisting out. Okay, I I will know answer SWOT to you. support is required, but as Yep. you said, you don't have. Mhm. I'm not here to argue. What I'm just special asking something. equipment do you need to conduct a raid? I'm not asking for in order to conduct a raid, sir. I am hereby नहीं asking. मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आपको ऐसे क्या स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए जो SWAT के पास है रेड कंडक्ट करने के लिए? So initially, first to secure that specific area, in which we can't, because initially what we were in assigned was to be as a detective agency. So if we are there in order to secure the items which we believe are illegal or which is leading to processing of any kind of drugs, we should be focused on that, and SWAT should help out there in order to secure that specific area while we are performing our actions. I still haven't, in the 5 lines you just said and the 2 minutes that you just said, I still haven't heard of a single equipment's name. I asked you the question, what is the equipment that you need, you think that you currently do not have to conduct a raid, that you need SWAT for it? Of course, see, and they have their. We don't have a tactical unit right now to be formed. SWAT is equipped with class 3s right now, which Okay, so is class right now. 3s, that's one. Yeah. Yep. Second. Yeah, in order to tackle out such high level situations in which such gangs are being involved, they do have this Officer Rock, can you tear gas. mention the second? Yeah, thank you. Yeah, Tear gas. Second. tear gas, smoke grenades, and all that stuff, which is like totally not our job. It's totally not our job. It's totally like tactical unit job, like tactical department I job, know which whose we job don't it have. is, but Yep. मैं बस equipments के बारे में पता करना Yep. चाहता. Got it. Yep. Cool. Go ahead. I think the conversation went a little sideways. Got sidetracked, and the एक चीज पूछनी है बस, and I think Chief James want, and correct me if anyone wants, if I'm wrong, anyone in the panel. What is the purpose of DEA? What do you guys pursue on a daily basis? Purpose क्या है आप लोगों का? मैं वो समझना चाहता हूँ. Our initial purpose is to just stop the cut source of any kind of drugs that are being put out in the city. Okay, initial was that, and now? And now it's the same only, sir. You asked for the said purpose. that your initial purpose. You said that your initial purpose. So initial means pehle. Okay, and So the later what one, is the which is final all purpose? the not the final purpose. The second one जो would भी guys be दिख रहे हैं, like and subscribe whatever करो the drugs are there in the city to cut that thing as well out. Hold on a second. Let केस me हो put गया my भाई phone on airplane mode. Sure. वो तो होना ही था Yep. To put out all the drugs which are currently there in the city, that to an end as well. Source and the present things. ठीक है. Yep. तो मेरे को बस आप एक चीज बताएं अभी. How successful have you been in doing that job so far as a department? As a department, I would say 40%. And ये metric कहाँ से आया? ये metric कहाँ से आया? What can you just speak? Can you just make me explain that? How did you come up to that 40%? What made you arrive at that 40%? 40% is a metric, right? Yep. What made you say 40%? Initially, the reports for drug specific weed were on a very high amount. Yeah, for example, like PD used to get these wheat plantations and everything on a daily basis. Right now, it's been reduced. The only thing what reports are being shown of that How people did are how did DA help in it? as I told initially, we did cut off the source that was coming out from Palito Bay.
look at it right now. Yeah, it was. Jachal, may I add something Hanji, in that? Hanji, please do. So basically, I would like to add is after the क्या weed बोले cell अब? went down, after we stopped receiving the calls, इंग्लिश में ही the बोले जा रहे हैं Seth सब लोग. Norris incident that took place, it happened way after the जज ने weed बोल got भी cut दिया off था from कि the हिंदी scene. में बात करो तो भी. Yeah. So क्या there क्या was क्या a क्या point क्या? where we, here's what I would like to add. There was a हाँ. point at which the weed selling was at its peak. Cut down because as you Hmm. said, they switched from weed. Capable to take out the shootouts which daily happen on you guys या daily जो operations आप carried out करते हैं without notifying. Jimmy, And sir. then how do you think आगे forward SASP should get involved and help you guys on this For sure, sir. situations? Officer Jimmy was being notified during these operation. Of course, you can have a cross check with him as well. कुछ बताएगा ऑफिसर जी मीनार से किसी को? जो भी गाइस देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों. I also want to know about that कि how do you wish to tackle out क्योंकि आप daily पलीटो अगर जा भी रहे हैं Oh, ये yes. situations हो So रहे हैं. the thing is that without proper evidences, I don't want any of the civilians to be harmed out over there. Okay. So regarding heroin, as we got to know a solid evidence, a physical evidence today, we what I wanted to do, we would have provided out information to PD, and they would have come with us in order to carry out the further operation. But that was the Okay, initial till the stuff. time you are finding out a solid evidence, Yes. you guys are getting shot at, you guys are getting tailed, you guys are getting into situations which eventually PD needs to get involved in order to save you guys as well, right? So don't you think you are lacking in the way of you guys are investigating right now? So we are lacking in the way right now in terms of manpower. Only person which were present over there was me and Prashant Kapoor. So we had to build out the whole
force again. And right now we are trying out if all the persons are being present for a particular situation, then only we are going out इंग्लिश for कर लेने anything. दो इनको. But there are many times when we are not fully prepared. People try to engage with us and we can't help during those situations. So in that case, of course, we do need help from PD. So On that's it. Go ahead. That's it. On 25th of September 2022, the request was taken for setting up DA department. 28th of November, DA department was set up completely, and the first batch was recruited on December the 1st. Okay. So 25th September से DA शुरू हुआ था. When did Officer Rock join DA? Give me a minute, I'm gonna check. Please do. I have a पूरी question, information sir. लेकर आया करो, Officer Veer, please. It was Don't from, like I told you, half-baked. sir, the first recruitment was done on December 1st only. Officer Rock was just before that. From 28th of November, to be precise, their DA chief, Officer Cypher, Michael Hans, and Rocksmith was there. I have a question, sir. Please go ahead. Okay. Rock, you said that you don't want to harm any civilians in your previous statement, right? Sure. Are you sure you did not harm any civilians? Yes, I'm pretty much sure. If I say that Seth Norris were harmed because of combined operation of DA and few officers were involved, then and do you still Do you have any evidences for it? Yes, one of the officer who involved, he gave a statement, but off the record he gave the statement to me. So just provide that on the record statement onto the Nico. jury, and then we can go ahead with it. Nico was the officer who gave the statement that. So likewise, you are telling me the way my what we say informants are informing me about how what are the things are being happening are all around the city, like regarding drugs. I should also trust the unofficial statement of your officer. Then of course, yeah, you should also trust my informants in that situation, Mr. Rana. I don't know about Bahadur Singh, but yeah, from Double D I did. I gave that statement to Officer JB. I think he can elaborate my statements over here. Is this not provoking the civilians and getting an action or reaction out of them and Rana, creating an sir, unrest in the as city? I said, I think you should have a proper confirmation. I already informed Officer JB, who is present right now in the jury. It's better he can answer that or question that. It would be really grateful. Okay, Rana sir, so what was the situation? The situation was, I guess there was a misunderstanding between Rock and Bahadur, where he thought that the chain was stolen, so he took it from him and
he returned it to one of the members of Red Mafia. I guess he knows someone, so he contacted them and returned it. So I that takes also place. shown the proof for the message during that time Yeah, as he well to gave me officer. the proof. Also, So Rock, there's one question from my side. yes, sir. You told that you are now investigating regarding heroin and meth, right? Heroin Yes, and sir. meth. So, 80% of the reports, the incidents we Mm-hmm. make daily, the Mm-hmm. suspects we Agent, catch what's your daily, 20? everyone, each one of them have joints with them. Mm-hmm. So how are they getting these joints? If you said that you eradicated weed, you got rid of the weed thing, Uh-huh. then how are they getting these joints? 10-9? As I said, sir, brothers was one of their sources. We are also onto some other sources as Respond well. at the courthouse. You're saying And that the yeah, whole city is taking weed from brothers. So that's the no, only source. no. As I said, I'm repeating it again. Brothers was their major source, which we did completely cut off. But as of now, we also got out the evidences that they are back into business. So which PD provided us on the evidences. So apart from brothers, that doesn't mean that brothers are the only supplier for weed. There can be other one, and we are still investigating on that. But I haven't seen any progress because So the joint thing hasn't, haven't yes. reduced So from. the another issue which I would like to put it out, of course, being answerable, but still, the thing is that I do understand your concern, but I usually never get out any kind of reports or even emails like the way you guys were saying by PD that we got these many amount of क्या कहते हैं, this joints from this person on this case. Like that's the thing which we got. The only Rock, message which I received, sir, let me complete my statement. Yeah. So the only message I received was today, and apart from that, nothing else was being shared. I usually have access to this MDT, but I have to go through the profiles myself and then ask for it. 90% of the times, what situation I am asking for, most of the times those MDTs were being incomplete, and that was being informed to the HR of PD as well. I'll And correct you in this. The descriptions were incomplete, but not the charges. The charges clearly mention possession of controlled substance, and the so, sir, evidences all before proves knowing that. out the incident, how would I question someone? I want to But know there that. is presence of wheat, right? And Yeah, that's also, there why. is. Rock, Yes, you sir. have the access to the MDT, right? What Yes, I do. better way can we share things But with them? of course it is. But a notification from your officers would be. How often do you check MDTs for the suspects you have named here in the report? Sabki, you keep a track of जो it, भी right? guys देख रहे हैं Yeah, लाइक I एंड do. You सब्सक्राइब go कीजिए I through, do. दोस्तों. check everything, right? I do. Then why do you want us to keep you भाई notified है किधर? for the thing जो already shared है तुम पे? Yeah. So, see, as I said, I have a small force which I just rebuild right now, who are being involved in order to find out source. हेलो अंबर गुप्ता कैसे हो? And my units to be over there who are That's currently. your job Yeah, to take care. all right. भाई सब I लोग understand. इंग्लिश में बोल रहे हैं अंबर, The हम basic क्या बोले point अब? is basically, since you are doing the investigation, it वेलकम is टू माय स्ट्रीम your अंबर responsibility गुप्ता. to put out a थैंक APB यू सो on मच फॉर the suspects that you think might Can be. you कैसे can हो you just ब्रो? repeat the thing? I didn't understand. What should I put? All right. What I am saying is, hello, am I Mm-hmm. audible? Yes, you are. So what I am saying is, since you would be investigating some particular suspects, it is Mm-hmm. your APB that you are issuing to the DEA units, right? Mm-hmm. So how would we know कैसे हो which ब्रो people are अंबर? you currently investigating? What are you investigating? Since you already have the access, so you need to check it regularly rather than us informing you about it. You sure about that statement? Of course, I would take it. If I'm being wrong over there, I think I've made my point. According to me, it should be informed. If you think it shouldn't, it's totally fine with me. Because you only said na you regularly check the MDTs, right? Yeah, but there are, as I said,
if I am focusing on brothers, them being so the main source for weed, and you are catching out a person who is from Vendetta and having a joint, how would I get to know that? But I want to know ki what else DA is working on. If judge allows me, then only, because I can only share that information to him. I think the whole point jury is here and the meeting is being held is I what agree, is sir. DA Agree, sir. doing But currently and of course, how things are gonna go of forward. course, sir. So if I have sent you those two documents, that means I wanna only notify to the jury about those two things only. Further You things, I haven't think sent any documents to the I panel. did. It was me. Yes, sir. So I did send it to you. That means that was the only stuff which I wanted to Okay, go so ahead with it. jury knows that you have done the weed on brothers thing and then these two cases. That is all from DA side right now, right? Anything Yes. else you would like to Bhai, tell us about how DA is working or English. what in future benefits, or I mean the way you guys are gonna go ahead with your force, समझ में not आता है दोस्तों, regarding बट operations इतना only, नहीं कि but हम how आपको you're समझा gonna सके lead the सब department overall with the force training specializations or whatever your view is आगे आगे के लिए. Okay, Sika, so in regarding to the future for DA, I would simply let you know, we are not the force who wants to be the person in action. We are ready to work on the back end, which means we just want to get out the get if you want to get the evidences. For example, right now, let me share this incident. We are also working on Balas. As I mentioned in my report, we came to know that Balas is having access to heroin, what according to my information. So right now, my people are having surveillance, usually over there, where we also came to know about a specific place which information was being shared out to Officer Veer, him being CID lead. That what I came to know, there is a specific what we say shop in which they have a broken this, what should I call, a bus, where many a times I see people out having no guns, specifically class 2 weapons, not at the back, but when they come out from that, they do have class 2s. So since that is not in my judiciary, I totally inform that kind of information to CID so they can take up a lead. But of course, if they might be having class 2s inside it, there is a high chance possibility they might be storing out heroin, meth, or anything like that. So all such kind of operations are being shared to CID. And if you're talking about the situation in which DEA is being attacked by any kind of organization, then yes, I would tell you I do need help from PD. The reason being that I have a small group of people who are not active at that period of time. And our main job is not to just fight with them, just to gather up the evidences. So if people are firing on us, we would just try to defend ourselves. The rest of the stuff should be taken care by PD. That's my main opinion, nothing else. Okay, even if you are 8 in numbers or 9, 10 in numbers, right? You guys want us to clear the situation? I would request please shout क्योंकि we cannot hear you guys. I'm already shouting. Sir, but we cannot hear you. They are Okay, so shouting. सर यहाँ तक आवाज नहीं आ you रही, think कोई बात नहीं. 8 or 10 of your DE officials are capable enough to take care of the situation or no? No. Alright, okay.
Can I ask a question? I have Yes, sir. बताइए. You are here to ask questions, Officer Anand. No, I was waiting. Okay, Rock. Mm-hmm. Today, that is not even 24 hours past, we found lots and lots of weed, right? Mm-hmm. According to your statement and investigation, you say that you have completely removed or completely stopped, eradicated weed cultivations. I think regarding meth and regarding heroin, it's been more than 1 or 2 months. I have a question to you as well, sir. You have been over here for a very long time in this city. You have been a part of CID. What proofs do you have against Legion? I can ask the same question to you over This here. review is for DEA, not for Officer Rana. Sir, sure, sir. I'm really sorry. I just wanted to answer that. Nothing I else. want to add up something, that's it, if you wanna allow me. Yeah, please go ahead.
जो भी गाइस देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। I'm not here to question any of others department. It's totally fine. Mhm. I'm not the one who like simply comes up and put out question to some other department rather than doing out their work. Okay, that was a. I don't know. I'll let go of that statement. Officer Rock, Yes, can you sir. justify? I'll just send across an email to you. Yes, sir. Okay. Is it possible for you to justify DEA's presence inside the city? I just want to know that basis the amount that the state has invested in DEA right now. Okay, just give me 1 second. I'll just send it Sure. to you. भाई यहाँ तो नेक्स्ट लेवल चल रहा है भाई। Yes, sir. I received it. Yeah. Sir, just a question. Was Scorpio paid from the funds of DEA? Anything that has been used by the DA, it's been used. It's been paid from the funds of the state. Oh, okay, okay. But sir, just have a counter to it. Wasn't like that Chief Cipher was a part of PD when this thing was And being... that came from state funds. Yes, yes, yes. I'm saying, and I haven't changed my statement yet. It's paid for by the state. Yeah, it's 22.2 million. Yeah, it's a huge amount. It is. Okay. I just want to understand. Okay, and I'll stick to this, and let's just have questions and answers around this only. Yes, sir. DA's job in the city was to control drugs and Yes. try and eradicate them. Has that job been fulfilled? What are the Yes. successful operations that you have done? Yes, you're saying yes, Officer Rock, but Officer Rana is telling me that he saw weed plantations in Palito today morning. Sir, But according to you, you have cut out their source. I do, sir, but I think it would be similar if I might be questioning their department. I'm really sorry. I have just seen people having class 2's SMG hanging out at tuner, but none of the things were being dealt out. And Mr. Robert was also being okay. Just a thing, sir. I might not. You don't know. Mr. Robert was kidnapped yesterday. I informed that people were having class 2's firearm during this situation. I don't think so कि वो अभी related है इस चीज से। I am just. Can I complete my statement, sir? Again, Or Officer Rock, I will just say the same thing again. I asked that let's just stick to Yeah, the if you're DEA discussing aspect. something about DEA, then let's stick to DEA. it is to DEA. Like if I am informing out something, so isn't that that it's something related to DA? It might be related to drugs, sir. Sorry. If I I'm just want to understand Yes. that how kidnapping of Robert, how Yeah, was that related to because the kidnapping was drugs? done. I know can- how you wanna explain it, but Mhm. it's your explanation is with the examples basically. We don't want Mhm. examples here.
Yep. No, I'm just saying because the people who kidnapped him was from brothers only. That's why I was just putting out. Sir, if I can speak, can I ask a question? Sure. Just one. Sir, I respectfully stand up first. So I just want to ask you one question, sir. I know that DE has not been 100% working. I know that the things are not the drugs have not been eradicated, but we are trying our best, and a lot of things have been controlled, which even the police officers have seen. A lot of people Officer, carrying you're good. very lot of less drugs. एक last चीज sir, that आपका शुभ नाम 100% बता बेटा. crime cannot be eradicated. Obviously. Otherwise there won't be any DEA, there won't be any police department. So Absolutely. and the limited resources we have been given, we are trying our best to do it. Limited we have resources? our officers, the limited resources regarding the Sir, manpower. DEA पे manpower is not my department, right? Yes sir, we always ask PD for I some can backup provide and you the resources. Wait a second. You asked PD for some backup. Do you inform, and this is something that I told Officer Rock way before, that do you inform PD before going on any operation that, and I mean, if you go on any operation and then you suddenly give a call for ki backup leo, that's not possible. This is something that I've explained before, that there are multiple things that the PD officials are also doing. They cannot just leave a situation and come to you for backup at all points in time. I have told this thing before that if DEA is going for any operation, can you tell these guys in advance, 8 hours, 24 hours, that hey, we will be going tomorrow for an operation here. We need 4 people. How difficult is it to do? This has been discussed before. And I'm sorry, your good name, officer? sir, this is of senior special agent Abhikarthos. Abhikarthos. Mr. Abhikarthos, can you also tell me what resources you asked for and you did not get from the State Department? Okay, sir. Regarding the backup, I can completely I am understand asking that you they regarding the state aspect. Answer my question, please. Sir, whenever we What resources used did you to ask? What the resources Yes, that you that asked from the requires. State Department, did you get them? What resources you didn't get? Sir, one of the major resources that we could have detained people and interrogated, but always there was a clause that whenever we used to Are you detain not or detaining arrest someone, people and questioning or already? sir, whenever we used to do it, there was always a complaint, and we were always held responsible for some things which was never to be asked about. For example, detaining someone, and we were always in the captain office with Rock. Even I was there present with him, and we were always used to be asked about why we detain him, why did we question the other person, how did we question the other person, just Because on the basis exactly, you of need to small have proper complaints. proof. You need to have proper proof for it. I don't even allow PD to go ahead and just start raiding houses. I don't. Raiding houses and There is an arrest warrant which goes out for people, Officer Abhikarthos, and it goes Exactly, out sir. only basis proofs. Exactly, sir. That is why we didn't even request for any raids till now, so that we can But you are confirm saying every bit of detaining. information. Sir, Arre detaining a sir, person and asking them questions is a very small thing. It's the you first know part of that the you need investigation. proper. No, I'm so sorry to say that you need to have proper proof to detain an individual. You cannot just go around detaining individuals basis your whims and rhymes. You think that okay, a person, just because you think that a person has done wrong, you cannot. That's a No, civilian's sir. right. That's not. I'm saying. I'm saying Do you have on proof? basis of probable cause. Probable cause, Basis sir. of probable As per cause? the sir, पुलिस वालों की ही reports है. For example, Miss in terms of Diana's case, she was a convicted suspect in kidnapping of one of the DA officer. That's why we questioned her. That's why we questioned her in our terms, because we wanted to know that what kind of Was she information got red-handed? regarding particular. Was she got Yep. red-handed? Yes, sir. So then you can Exactly, sir. obviously detain her. Yes, that is what I'm trying to say, sir. When we detained her, when we questioned her, just because of one single complaint that she filed on a Rock, we were questioned for like 30 minutes.
and it's like it felt like we were always on a part of a question where we have to prove ourselves that we are trying to question someone on the basis of probable cause, which PD already knows that what is the probable cause and why we are detaining and why we are questioning someone. That is what my whole point is. When we are even held for questioning a convicted suspect on a caught red-handed kidnapping an officer being involved with the gangs, then कोड 0 हो गया भाई. what is our credibility दोस्तों in कोड terms 0 of हो गया. trying to show that we are trying to do something? I'm not even saying that we are trying to raid someone. I'll just say one thing. Wasn't that person a part of DEA? Sorry, sir. Was that person a part of DEA? That person was part of DEA only, right? Yes, sir. She was. What do you have to say about that? Tell me one. I think there has been only one person from the PD department. I'm forgetting his name. Which officer was that who went ahead and joined some gang and then did some stuff and is nowhere to be seen in the city right now? Aiden. Aiden, He yeah. was caught Aiden's red-handed. He was caught red-handed, and he was. And I think he left, he was let go of, he was fired, right? He 3 was by 3 fired, strikes, yeah. right? He was suspended and fired. Yeah. The Yeah, guy was she suspended resigned, and sir. fired. She exactly. She also resigned before doing this. That was her choice, no? Exactly, sir. That is what I'm. PD eradicated that particular one rotten apple from the good basket of apples. जो भी guys देख रहे हैं like and Sir, subscribe कीजिए exactly. दोस्तों. That is what my point is. When we are trying to do the same thing, we are getting questioned every day and night. सर वो छोड़ के निकालने में और छोड़ के जाने में फर्क है ना? Exactly, sir. But information तो information है ना सर, चाहे तो DA आपकी की जाए ठीक है, या PD आपने की करा, जाए. आपने हाँ उनको रेड हैंडेड कॉट करा, ठीक है. Again, my whole question around everything is, wait, Officer Rock changed? Yeah. He had a code 0, sir. Oh, okay. Is he coming back? Most probably, yes, sir. Most probably, yes, sir. Okay. My only question is, you tell me what are the successful things that you have done. मैं तो आपसे आपका आपने जो कुछ भी नहीं करा या कुछ नहीं हुआ, मैं तो वो मांग ही नहीं रहा हूँ. मैं तो कह रहा हूँ आपने सक्सेसफुली क्या कंप्लीट करा है, मुझे वो दिखाओ, पैनल को वो दिखाओ. ये बंदा सही है. Sure, sir. First of all, let me introduce myself. My name is Bittu Rana, Senior Supervising Special Agent. So basically, I am from the starting of the DA. So I think I can answer this question very correctly. Okay, so our first case was in the guidance of Cypher sir, when we raided on a house at Winewood, where they were like growing weed, a lot of weed. It was around 500 with the help of PD. And our second case was at Palito against brothers when they surrendered in front of PD with all their their equipments and accessories related to weed and all. Who did? And the other cases were when we questioned Andy Roy. He was leading in related to drugs and stuff. He also Heroin, to be specific. Yeah, to be specific, it was related to heroin. He told us about all the things which is required to make heroin and to how it is made up in the city, using that heroin table and all those stuff. And we have also questioned Mani Singh. He gave us the verbal statement that brothers are holding up meth lab, and still we are working on that case. And we have one more case. Yeah. Yes, sir. Judge sir, I have a question. Bittu sir. Yes, sir. यार मैं एक सेकंड let me ask a question. Yeah. A group of people, you said that you eradicated their weed, is still growing weed in the city right now.
है, and today what an incident happened that I totally condemn कि आज ये incident हुआ. We got an information from PD and I totally support them, but sir जो ये चीज़ें हो रही हैं, क्या उसके लिए DA डिपार्टमेंट अभी भी नहीं रहना चाहिए जो हमें इतना कुछ सक्सेस मिल रही है in the recent times? I honestly think that the PD department can do this better. So for that we need Do you know? records, Do na? you know? Do you know about the raid at Balas? Yes, Yeah, sir. we Yes, do sir. know. We know. We know. Do you know Balas is almost crippled in the city right now? Do you know what all information what all information we found? What all important information we found? आपको सिर्फ एक Yes, हेरोइन sir. पैकेट मिला है. हेरोइन बनाई कैसे जाती है वो रॉबर्ट को मिल गया. So Sir, So we also technically know that. they got the source. we They also are know that, getting sir. closer to the source. Agreed, they are getting closer to I them. want to put forward a point. Please tell me. Sir, incident number 900 बिट्टू राणा. सर जितने भी DEA में है, most of them, I'll not say everyone, most of them have a record. बिट्टू राणा was involved in the store robbery. मतलब उसमें kidnapping भी है, reckless evading, robbery. Sir, Wait, what? Yes, Yeah. And इनके Yes, जो sir. स्पेशल कमांड थे वो तो ग्रैंड थेफ्ट आउट ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल किडनैपिंग में भी इन्वॉल्व थे. sir, may I speak? Wait a second. I just need to wrap my head around this information So- right now. So is it like something के are criminals allowed गया DEA भाई. departments or That- something ऐसा कुछ That है? date, हो गया भाई, sir, खत्म. date is 23rd July 2022, which was कांड हो गया. prior to the establishment of DEA. Sir, yeah. May I speak? So there is in no my defense? NOC procedure, there is no background Wait a second. verification, I nothing? Can someone open the MDT and check what all Diana Reason has done so far? Yeah. Sure, I will. Providing. Or should I? Let me just have my medication. Oh, I'm so sorry. I need it right now. Sir, can you give me that medication to me as well? मेरे को भी लग रहा है जी सुनने का जरूरत पड़ेगी. Sure. Okay, You would have to get a sniper shot for that. What did you say, Veer? Kera, you have to get a evading- sniper shot for that because I got a sniper shot and because of which I got the medicine. Yeah, that's Oh, his okay, recovery okay. medicine, Rock. That's not prescribed to you. But it's okay. I think you would need It's it as okay. well. Yeah, okay. Yeah, no. Shall we provide the details, sir? Known convictions? Now, please batana zara. And Like, check, nahin, Officer Rana, please check if there is any before she joined the DEA department. checking. No, there was nothing. Answer. Sir, I have a question to you, Judge Charles. Can you answer sir, me थोड़ा सा sir. हाँ. देख रहे हो दोस्तों, May I speak in खुद my की defense? चेयर निकाल ली. रुक कर लो बोल लो सर आपका डिफेंस तो हो गया, आपको तब केस करना था, तब डिफेंस होता ना. सर अभी क्या नहीं, डिफेंस? I mean, regarding like my one sin that I committed. it's fine. Judge Charles, can I make a statement over here? इनको देख पहले रहे हो कुछ दोस्तों, दिखा खुद रहे की हैं, चेयर इनको लेके दिखा बैठे दो, हैं फिर भाई करेंगे आराम statement. से. सर वो जब तक ढूंढेंगे तब तक वो थोड़ा On May, sir, I was waiting for your go ahead, sir. No, In go case for ahead. a criminal possession of firearm class 1, possession of stolen property, felony possession of controlled substance, kidnapping of government employee, vandalism, possession of stolen, obstruction of justice, reckless evading. Diana Reason. Sir, I would like to highlight and repeat felony possession of controlled substance. Controlled substance. That means drugs, maybe. Yeah. Yes. Yeah, in large quantity. In large quantities. Yeah, that's How a much felony quantity? charge. Because that's felony, right? That's felony Yes. charge. Yeah, Not Yes. misdemeanor. More than 20 is felony.
बोलिए ऑफिसर रॉक। Sir, I just want to know, since you are like my superior, my boss. So of course I was not there when this department was being what we say brought up in the city, since I was having a misconception of federal agency as well. Like you were one of the maybe the initial founding bodies who established DEI, according to me. Sir, I just had a similar question. I don't know. I never got this answer. Maybe today is the right thing to ask. A person who was initially being suspended, and later on, I don't know whether he resigned or being suspended from PD. He was He suspended. becomes, yeah. He become the chief of DEA, and like having similar incident. I want to know, like as I came to know, like Bittu Bittu ji had criminal records. Like initially, since department sir आपके verification के through ही गया होगा sir, तो I thought कि an NOC would have been provided by any of the To the superior chief. bodies like mayor or either from you, like because initial department में sir आप लोग के signature तो गए ही होंगे. To the chief. To the chief? Yes. Shall I answer To that? the chief of DEA. No, yeah, I'm just, I just wanted, had that doubt, na, like chief of DA would have been appointed by your presence only, na, sir. That's why I was asking this. एक सेकंड आप शॉर्ट में बताओगे आपका क्वेश्चन क्या रॉक? सर मेरा क्वेश्चन ये था, जिस तरीके से इनिशियली जो फाउंडिंग ऑफिसर्स थे या एजेंट्स थे DEA में, लाइक बिट्टू जी, हमारे चीफ जो थे पुराने, साइफर जी, जैसे जो वो सस्पेंड हुए थे अकॉर्डिंग टू ऑफिसर रॉबर्ट स्टेटमेंट, एंड अकॉर्डिंग टू राणा स्टेटमेंट, बिट्टू जी भी इनिशियली वो थे, क्या कहते हैं, इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे एज बीइंग टोल्ड टू अस. सो जब डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश हो रहा होगा तो ऑफ कोर्स सर आप हमारी सुपीरियर बॉडी हो, एंड आपके साथ कोई और भी होंगे, तो आप लोगों ने कुछ तो एनओसी प्रोवाइड की होगी जब ये डिपार्टमेंट सेट हो रहा होगा, एंड सो दिस क्वेश्चन शुड हैव नेवर बीन पॉइंटेड इट आउट, क्योंकि बिना आप लोगों के अप्रूवल I'll tell you. Yes. I would like to Okay, yeah, answer go this. ahead. The NOC I'll add regarding after you. Yes, the After you. NOCs and regarding Cypher was already given, discussed, and वो time पे Cypher had only one or two member जिनके साथ भी जिनका भी NOC check हुआ था, and he was duly informed that there should no criminals or anyone with a MDT record involved in their department. क्या who बाकी was everything with him? procedures were done. Cypher के साथ I don't लीलू remember. प्रधान Sir, थे initially. So लीलू प्रधान जी sir. के ऊपर भी कुछ A new department to specially focus only on drugs. Of course. Just because he was suspended from LSPD, he proved to us in the conversation and the reports that he had then shared, he had back then shared with Mayor and I, that what's his plan to go ahead with it. So what we decided to provide Officer Cypher all the things that is necessary, because we at that point thought that yes, there is a जो भी lot guys of देख रहे हैं, like and subscribe drugs कीजिए that's दोस्तों, happening नए in the हैं city, और पुराने हैं तो which कमेंट the कीजिए. PD was not देख रहे able हो to भाई, control back then. खुद की चेयर लाके बैठे हम. Okay, agreed. And that is the वो भी reason कोर्ट में why we DOJ के gave सामने. officer, your chief, Officer Cypher, all the आज तो राड़ा हो ही जाए. clearly drawn out and told him that please, no illegal activities.
As simple Of as course, that. agreed, sir. And when did PD find it out that Bittu Rana was being involved in any of the criminal activities? Let me answer that. Yes, And sir. coming to when we was involved, we informed this same thing to Cypher long back, and Mm-hmm. he said it is cleared. I don't know how it got cleared. And when coming to NOC, let me tell you something. आपका एक business नहीं है. Even if it was a business owners request or interviewers HR, they whatever जो भी guys equipment देख रहे was हैं I like think and Rana subscribe कीजिए sir, दोस्तों. your SSP chief already mentioned regarding the NOCs and everything. So we should not go to the point of I'm just business saying. over here. I'm Sir, just sir, saying. let's not waste the time of jury and judge and ours like by just your saying statements over here. I'm saying NOC should, if you need an NOC, you should have been requested, not we proactively provide. That's what I'm saying. Rock. Yes, sir. What is the procedure to get inside DEA? He You needs require to. NOC. I know in my tenure, I don't ask for NOCs. I Why? ask for a why? Like I have made that what we say So what is the like procedure. procedure? Yeah. Regarding the procedure, I asked for a resume. Yeah. If And uh-huh. do you check Yes. their background? Of course, if it's a resume, sir, our background would have been written on it. How How do you verify it Background as if the in person has been a criminal or not? like of course like after that we check their MDT as well. हाँ वही तो That's पूछा what I'm मैंने saying. कि तो वही तो resume में पूछ कौन रहे हैं. लिखेगा? Mm-hmm. That is what I'm asking you. Yeah, so that's the thing which I did. As I'm saying, I was being Okay, appointed right now. I think we've come a long way, and I think Yep. the last question that I'm Mhm. going to ask you is, Yes. give me a reason why I should not dissolve DEA right now. Give you a reason. So if you would get to know that I and my colleagues have been trying to rebuild the whole structure for DA, which we believe initially we were having too many issues, due to which we were also unable to provide out all the necessary proofs, would I say, instead of getting reports like Rana was saying, to the necessary department like DOJ, and would have carried out proper what we say this execution of certain operation with the help of PD, which was not being dealt earlier, can easily help us and the whole city not. Regarding information sharing, and what I would propose, if you help us out, like not help us out, I would just simply request you, if you just allow us to comply with our duty right now, we would be providing out all the necessary steps which are being required in order to have our department excel in all field, not only in drugs but in something else as well. Yeah, I'll just give my verdict now. Anyone has any other questions, or should I move ahead to the verdict Sir, from the panel? should I clear my point, like the allegations which are put on me? No, those are No, not no, 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 allegations. no need And to we are do it, done sir. with it. It's Okay, a long sir. time. Thank you. Judge Charles, I have a point to say. Yeah, please tell me. Judge Charles, sorry if like मेरे opinion से किसी को कुछ like harm होता है, but I have an opinion to make. I think sure. the jury you have selected is biased. Okay, thank you. I have a proof for that now, so that's why I'm stating it. What is the proof? The proof is I got a recording from someone. The high commands of PD hates Rock, so that's why before also PD has never not helped us in one situation. Also, I have like all the recordings about. Do you think I don't have recordings of you guys saying stuff about PD? But we are not the jury, sir, na, right now. They are like our departments on the line.
So that's why I'm Do you saying. think I should? Do you think I should not dissolve you immediately after saying shit about your colleagues? Maybe not the department, the person too, who said shit. Why not the department? Because the Because department it's should being not. cultivated. Because it's being cultivated. I don't think so, sir. We have our own brains and all. अगर एक बंदे का कोई decision होगा, he should go with it, but not the. Do understand that the whole panel cannot be wrong, biased. There can be one or two people which might be. It was my opinion, sir. मेरे पास recordings and all है जिस चीज मैं में पूछ तो लोग रहा ये हूँ बात ना, कर मैं आपसे तभी पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि पूरा पैनल में सब biased है? For me, yes. क्योंकि उन्होंने बोला था हमारे हाई कमांड्स because should I explain the situation to you? It's okay, Professor. There's no point. It's fine. Let him give out. Yeah, no, please explain the situation to me. I want to know. Okay. एक दिन हमारे ऊपर अटैक हुआ था without any like notice and all. ठीक है. In that attack, PD was also seeing everything. हमारे agents को उठा के लीजन पे लेके गए थे. Legions पे they were having a massacre of like our agents. Can you tell me the proof in the summary, please? Proof I was having a video recording and of everything. My bodycam was I was off duty and I was like standing near them. और मैंने उसी टाइम PD को inform When किया. you say them, can you please be specific? There were specifically two gangs, Red Mafia and Balas, at that point of time. Okay, so you're saying Red Mafia, and who is the person on recording and what have they said? I have the face, but I don't have the name. So I have to like cross verify with someone in the PD who know, yeah, or like have a verification of his face. But Is There that was person? Robert. Okay, Robert was saying what? Okay, मैं वही आपको बता रहा हूँ एक एक चीज उसके सगारे. उस टाइम हुआ क्या, मैंने कॉल किया नहीं, PD को. आप मुझे प्लीज ये बताइए रॉबर्ट क्या बोल रहा था? आई वाज ऑन अ कॉल विद रॉबर्ट कि रॉबर्ट नहीं, मैं आपको स्टार्ट थोड़ा सा पूरा डिटेल में समझा देता हूँ. पहले वो लोग लीजन पे थे. लीजन पे पीडी हमारे सामने आई, हमारे सामने दे वांट टू स्टॉप द लाइक उनको. पीडी हैव हैड अ कॉल विद लाइक सीनियर हाई कमांड. उनको एक कॉल मिलती है. रॉक ने क्या बोला रिकॉर्डिंग में, आप मेरे को ये बताएंगे प्लीज इन शॉर्ट? मैं आपको वही बता रहा हूँ. एक पहले उनको रॉबर्ट जो था मेरे सामने, उसको एक कॉल आती है कि इनको बोलो कि लीजन पे मत करे, जो करना है डीए ऑफिस पे करे. दिस वाज हिज एग्जैक्ट वर्ड्स. फिर उन लोगों ने बालास को आस्क करा कि गो टू द डीए ऑफिस. डीए ऑफिस में मैसेकर हो रहा था. आई वाज ऑन द कॉल विद रॉबर्ट, इगोर, बोथ ऑफ देम. आई क्राइड, आई बेग्ड देम कि हमारे एजेंट्स को बचा लो, दे आर हैविंग अ टेररिस्ट अटैक, एक आप आ जाओ, सेव देम. दे सेड हमारे was a terrorist attack? Because there are 20 people attacking on department with the SMGs, ARs, and it was the an katanas. open shootout on us, Judge. Yes, sir. Do you know the definition of? Do you guys know the definition of a terrorist attack? It was a government office and they were shooting on the government My office question throughout was, the do you guys know the definition of a terrorist attack? Do you guys know who is a terrorist? I think if a government body is A attacked by multiple person people. who does not No. fear any government entity apart from their association is a terrorist in front of You're government. absolutely wrong about that. A person, exactly. When the whole city is at a threat, when civilians are at a threat, the job that you have chosen, guys, it is there where there will be threat on you guys every single day. Okay. Sir, PD पे attack को फिर terrorist attack क्यों आप माना मेरी बात जाता है? सुनो, नहीं माना गया पीडी पे अटैक को टेररिस्ट अटैक. सर There have been माना times गया when है, PD. SWAT की 20 यूनिट How do you निकली know हैं. that? हाँ तो सर SWAT की मेरे 20 यूनिट सामने निकली हुआ है. है. एक सेकंड SWAT की 20 यूनिट निकली है, तो how the fuck can you say it that this was there, that we called it a terrorist attack? मेरे को राणा सर ने अपने मेरे मुंह पे बोला है, डीए वाले पागल हैं क्या? ये उन्होंने जो बोला है रिटन में, आप मेरे को रिटन में बताओ कहां लिखा है टेररिस्ट अटैक. Either you want to listen or you don't want to पॉइंट से listen. हट रहे हैं, पॉइंट से I'm हट रहे I हैं. am telling you asking straight you. up. Rana I sir am said to asking. me. My question to you is, I am asking you in written, where have we classified it as a terrorist attack? I do not believe on words. Leave the terrorist attack. Leave the terrorist वही attack. मैं कह रहा हूँ. Why should I leave the terrorist attack now? Why should I leave the terrorist attack now? Yeah, I will. अभी I will सर give एक you मिनट, the एक मिनट, अभी reason. सर I will एक give you मिनट, the एक reason. मिनट, I will एक give मिनट, the अभी reason. सर प्लीज, अभी सर एक मिनट रुक जाओ. चाल सर, सॉरी, मेरे मुंह से अगर टेररिस्ट मैंने रॉन्ग वर्ड चूज किया, आई एम सॉरी अबाउट दैट. देयर वाज अ अटैक ऑन अ गवर्नमेंट. Do you guys know that I stopped PD from assigning people as terrorists? Do you know how much jail a terrorist gets? Okay, that was It is very no. Listen to me. It is very easy to throw around the word terrorist when you don't even know the meaning of terrorist.
You guys are in a job where your daily lives are at risk. If you do not like it, leave that job. मैंने कभी उस चीज की Every रिक्वेस्ट की नहीं 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 nobody नहीं नो said नो that, ही sir. सेइंग Nobody ना said that. गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल के ऊपर वो होता है रिस्क होता है गवर्नमेंट बॉडी के ऊपर रिस्क होता है तो उसे टेररिस्ट कहते हैं. Because the government body मैंने protects the city, and if the first line and the last line of the And defense exactly have my been point. taken out by a certain amount of people, sir, if पूरी there बात is an सुन लो. attack on the city to create terror in the city, that person and the person who's causing it, those are called गया terrorists, भाई. not on the Okay, sir. government So body. what do you mean by अब तो पक्का DEA for गया. example, we're not calling ourselves a federal agency, leave that alone. A government agency, 10 officers on gunpoint, cuffed, and they were sliced, or they were using melee और attacks on them publicly assassination और openly, the publicly. What do you mean by that? What did you guys You do? explain me the situation No, no, now. no. अब आप No. situation explain. I'll get in deep into the situation. Listen to me. First of all, you do not ask an explanation from me. One. Second thing, I I'm will just only trying to give you an understand, sir, explanation. क्योंकि मैं Listen to I'm me. trying to Now get you the listen to question. me. Listen to me, Officer Abhi Kartos, or I'll suspend you right now. गया. खत्म. टाटा. I will Bye bye. not just basis 10 seconds of a particular situation. I will not take a decision. I have never done it. I always get into the depth of a particular situation and then I take a decision. If you just tell me that there are 10 people who were sliced off, what did you guys do? I would like to get into the depth of that first. What led to that situation? Yep, So if मैं you बताता give हूँ me फिर. the 10 seconds of a situation, then there is no difference between you and Weasel News. Okay. एक मिनट रुकना प्रोफेसर सर. मैं second thing, I'm trying to educate myself, sir. I'm sorry if you feel that I'm just questioning you. I'm really If you sorry. need education right now, first, no, listen to me. If you need education right now, resign from DEA immediately. No, You I'm are just at a trying to ask pedestal. you You are one part so of a because, government body. sir, If you need High education, you Command should of resign Police from DEA. Department says something else. You are telling me something else. I'm just trying to be on a main ground where I Tell know me. the good and the bad of the both. Okay, I'm just asking you one question. When I Yeah. came to PD, when Rock was kidnapped, I came to PD, asked for their help. I did not enter their premises. I was told by Rana sir, ये डीए वाले पागल हैं क्या, ये पीडी में आ जाते हैं. एग्जैक्ट वर्ड्स बता रहा हूँ, ये डीए वाले पागल हैं, पीडी में आ जाते हैं, पीडी पे गोली चलवा देते हैं और फिर वहां पे हम लोग उसको वो 99 का कॉल बना देते हैं. Do you have any proof of it? Exactly, मेरा body if you cam have on a था, sir, proof, उसी वक्त. no. If you have proof of it, I will suspend Officer Rana immediately. I will give you the proof, sir. मेरे पास कुछ Great. प्रूफ है, मैं उसके मेरा उसके बॉडी कैम रिगार्डिंग का बात पूरा करूँ क्या प्रूफ सर? है. मैं वहीं से निकला था, उनके सामने से निकला था. And I And- overheard it as well. It was And what very about the shocking proofs to hear against that DA? from sir. You have proof against DA, sir. I am ready to get suspended right now, but I need to understand on a plain ground that like even if अभी we are सर एक taking a सेकंड ना, अभी decision on सर a एक whole सेकंड, department, एक it सेकंड अभी is सर. why is Sorry, PD please. versus DA all the time. I'm just asking, हमारा डिपार्टमेंट क्यों नहीं हो रहा सर? एक मिनट ना, एक क्या मिनट, ये एक मिनट, पीडी एक वाले, मिनट. ये सॉरी डीए सॉरी वाले सॉरी. क्या कर अभी रहे हैं, ये सर, अभी पीडी सर वाले एक क्या मिनट, कर रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए अभी ना सर. सर एक मिनट, एक मिनट. जैसे सर चाल सर क्यों आपने नहीं कहा होना अभी, चाहिए? एक मिनट ना सर प्लीज, मैं एक चीज बोलूंगा बस. आपने हाँ जैसे जी, अभी कहा कि आपको अगर प्रूफ मिलेगा आप राणा सर को सस्पेंड कर दोगे, राइट? जी. आपने ये तो नहीं कहा ना कि मैं पूरी पीडी सस्पेंड कर दूंगा, पूरी पीडी को हटा दूंगा उसी टाइम पे. Obviously. एग्जैक्टली, सो दैट्स माय पॉइंट कि अगर मेरे ऑफिसर ने किसी ने ये चीज कहा है, सर सस्पेंड दैट ऑफिसर राइट नाउ. Obviously, I will suspend that officer. एग्जैक्टली. मैंने कब और कहा कि दूसरी मैं चीज मैंने कब कहा कि मैं DA सस्पेंड कर रहा हूँ? वही मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ. पीडी पे उस टाइम पे मेरे पास एक एक प्रूफ है कि जब डीए पे अटैक हो रहा था, मैंने इगोर सर और क्या नाम है अपने रॉबर्ट सर, दोनों को कॉल करके बैक किया है कि सर प्लीज भेज दो अपने ऑफिसर, देयर इज एन अटैक, प्लीज आप हेल्प कर दो. ही सेड कि मैं नहीं आऊंगा, मेरे हाई कमांड ने क्लियर मना किया रॉकी हेल्प करने से. दैट वाज हिज एग्जैक्ट वर्ड्स. Your officers from DA office. Who was the one? I was the one, right? क्या? एंड एक मिनट. एंड जेट चार्ल्स Just let me मेरे ऊपर listen. allegations है. हाँ मैंने Just बोला sir, था. if you have permission, Uh, can I speak? I need the permission to explain. The reason is that Just give आपको me मैंने yeah. एंड यहाँ सारे ऑफिसर्स एग्री करें सर. एक बार नहीं, हर बार हमको 911 आता है, सिचुएशन कहीं और शुरू होता है, ऑफिसर्स कोई सिचुएशन में होते हैं, पीडी के अंदर घुस के गेट्स गलती से अगर बंद है या ओपन है, पीडी के अंदर घुस के गोलियां चलाई है, एंड दैट सिचुएशन वाज टर्न्ड इनटू 99. एक बार नहीं सर, 2-3 बार हुई है.
एंड 19 हमको 911 कॉल्स आते हैं, वी गो देयर टू हेल्प, बट हम देखते हैं लीजन की तरफ से गाड़ियां, पीडीए की गाड़ियां सीधा पीडी के अंदर, एंड दैट इट्स लाइक ए कैवलरी गेटिंग कंप्लीट गैंग्स इनसाइड पीडी, and in that we have lost our officers, we got casualties. मैंने ये बोला था ये पागल है कि यहाँ क्यों आ रहे हैं, वी आर रेस्पॉन्डिंग, ये बोला था मैंने। एक मिनट आना मैंने सर। ये नहीं बोला था कि टेररिस्ट अटैक, मैंने ये बोला था लीजन ने बॉम्ब थ्रेट्स दिए, 6 बॉम्ब्स लगे, एंड यू आर गेटिंग दैट कैवलरी इनटू द पीडी। मैंने बोला था सर, आई डोंट नो, मैंने बोला था because multiple times they got the situation inside PD garages into PD reception. जो भी गैस Can देख they रहे हैं लाइक deny एंड PD सब्सक्राइब कीजिए reception से दोस्तों। ये फायरिंग की है क्लास 2 भाई से? आज डीए वर्सेस पीडी और सामने Can I से can I पास can I हुआ say है। something, Officer Rana? हाँ सर। And everyone present in this courtroom. What did we? What was the purpose of getting of this meeting? आई अंडरस्टैंड सर, माय बैड, सॉरी, बट एलिगेशंस कर रहे तो उनका गलतियां भी बोलना चाहिए था ना सर। हम ये किए थे आज आप ये कह रहे हो कि अगर आपको कोई आप पे कोई उंगली उठाएगा तो आप उस पर भी उठा दोगे? अरे ऐसे नहीं सर, बट यहाँ रॉबर्ट एंड मी उस दिन हम कितना कंट्रोल किए वी नो। So I was in the situation, I was the one And we do everything and every time we get blamed. हमको पीडी हेल्प नहीं करती है, एंड डू यू नो आवर चीफ कितने बार हमको बोले कि जब भी आते हैं उनको हेल्प करो। वी आवर ऑफिसर राणा, हाँ सर, मैंने अभी क्या बोला? माय बैड सर, आई एम सॉरी, आई एम सिटिंग डाउन। Rana sir, relax, sit down, please. Robert, you can sit down as well. Again, last question, as I was telling 15 minutes ago, is that why I shouldn't dissolve DEA? Please tell me. Sir, do you want me to repeat it? Please do. Sir, it will be difficult for me to make that statement again. Try to understand. Mr. Rock, रो दिया भाई। या हंसी आ रही है मुझे समझ में। Sir, Sir, can we have a break for like 5 minutes if you don't mind? Yeah, after let's all have this a thing? break. Let's have a break for 5 minutes, please. Thank you, Please. sir. Thank you. Thank you, sir. Can I see the panel in the chamber? Yes, please, sir. Officer, you have to stay. लॉल भाई खत्म हो Is it गया। locked, sir? खुलवाओ भाई Sir, can you open the door? Spaxi. अरे जाने दीजिए सर, जाने दीजिए। कॉफी पी लेते हैं यार। जाओ शांत हो जाओ, पहले तो सारे शांत हो। रॉक सर गिर रहा है। रॉक सर कहाँ गए? अरे यार रॉक सर को तो बुलाओ। अरे रॉक सर 20 मिनट के लिए गए। इधर आओ तुम, इधर। अच्छा 20 मिनट के लिए गए? व्हाट अ टाइम सर जी, वाह भाई। क्या करे न क्या करे। अरे यहाँ जा सकते हैं क्या? अलाउड है क्या? नहीं नहीं, बस यहीं हॉल में रहते हैं, हॉल में रहते हैं। हॉल में रहते हैं। इधर आओ सारे, इधर आओ पहले तो। सबका रिमांड है, आओ तुम सबका बयान। सर देखो हम तो मस्त सुन रहे थे कि क्या हिल रहा है। हाँ रुको रुको रुको, अभी सर, हेलो अभी सर, इधर आओ। अभी सर आप इधर आओ यार। अभी सर, अभी सर तो चिल कर रहे हैं भाई, लेकिन बिट्टू सर आप मानो ना मानो, थोड़ा पर धीरे से बोल लीजिएगा, ठीक है? पर अपना इनका जो पैनल है बायस तो है। चिल आउट चिल आउट चिल आउट। मैं बिल्कुल आप लोग का सबका गुस्सा समझ रहा हूँ, दुख दर्द समझ रहा हूँ, और मेरे से बेटर कोई समझ ही नहीं सकता being here when this DA was not even founded. I have seen all these things. तभी I'm saying कि वो आप अगर उन पे जाओगे तो हमें ऐसा नहीं करना है वहाँ पे, समझ रहे? वही नहीं करना है वहाँ पे। अरे वो नहीं करना, बट आप समझो ना, दे आर एलिजिंग अगेन एंड अगेन कि पीडी ने ये किया, पीडी ने वो किया, पीडी ने किया। अबे कुछ नहीं किया भाई। जब हमारी जरूरत थी, जब हमें काम की चीजें थी, तब तो आए नहीं तुम लोग। देखो पीडी ने गिनवा रहे हो हमें 20 चीजें सर। मैं एग्री कर सकता हूँ कि हाँ ठीक है, पीडी ने किया है जो भी काम किया है, हम उसकी टोटली रिस्पेक्ट करते हैं जो भी किया है,
ठीक है, जितना भी किया है हम उस पर बात नहीं करेंगे, कितना किया है, कितना करना चाहिए था, क्या था क्या नहीं, समझ रहे हो? समझ रहे हैं सर। और मेरे पे एलिगेशन लगे वो देखो, और उसके भी मेरे पास जवाब है, बट स्टिल उनने मना कर दिया तो नहीं बोल सकते अब। करेक्ट। अब मैं बताऊं उसमें वो जो सीन का जो मैं बता रहे हैं, उस टाइम पे मेयर साहब के सामने एमडीटी खुली थी, मेरे पे एलिगेशंस थे, मेयर साहब ने बोला था कि इनको 14 डेज तक हायर नहीं होने देना। आई वाज नो, मैं एक एज एन वो था, मतलब क्या कहते हैं उसको, अनऑथराइज्ड डी एजेंट फॉर 14 डेज। देन आई हैव टेकन एनओसी फ्रॉम पीडी और पीडी डिपार्टमेंट ओनली, फिर जाके मैं हुआ था। और मेयर साहब से जब भी मिलने जाता हूँ वो मेरा यही पॉइंट उठाते हैं, और उस पर मेयर साहब ने बोला था चलो कोई नहीं, एक है केस, और वो भी इट वाज अराउंड जुलाई, और डीए डिपार्टमेंट हमारा बना था अक्टूबर में, तो इतने महीने पुराने का था। तो मेयर साहब ने बोला था चल वेट फॉर 14, ये सीन हुआ था मेयर साहब के वर्ड से ही। आई एम नॉट सेइंग कि कोई और अरे कोई बात नहीं, देखो सिंपल एज हाँ, तो दैट। बस वही था ना, मतलब मैं यही कह रहा हूँ I कि just wanted to trigger the judge so that उसकी रियल चेहरा बाहर आ जाए कि वो he just wants DA to be shut down। मैं बहुत भाई धीरे बोल रहा हूँ। क्लियर बोला उसने भाई, दिमाग खराब। हाँ, तो I just wanted to trigger him at a particular place where he knows that he is gonna। ये विक्रमादित्य कौन हरामी है ये अपन? क्या हुआ? नीचे भी नीड यू प्लीज, क्या हो गया? अरे विक्रमादित्य वही है, सुनो अरे मैं खाना जानता किसी पे, खाना किसी मैं पे। जानता हूँ विक्रमादित्य कौन खाने है। पीने का नहीं खत्म हो रहा आज तो। मैं जानता हूँ अरे फेक भी हो सकता है, फेक भी हो सकता है। रॉक सर कहाँ गए? रॉक सर उनको बुलाना, प्रशांत को। रॉक सर 20 मिनट के लगाए बताया तो। सच्ची में गए वो? मेरे को लगा मजाक वो कर गए ना। वाह भाई, खाना दे दो बीच यार में कोई। कौन जाता है? अच्छा, उसके लिए 5 मिनट लिया उनने, ठीक है भाई। बताओ। मैं रो दूंगा भाई अगर उन्हें उसके यार लिए वो मैंने एजुकेट वाली बात बड़ी सार्काज्म से बोली, he took it personally bro, तभी he मैं कह took रहा हूँ it सर, really तभी कि मैं क्यों एजुकेट कर बोलना रहा हूँ अपने आप को। क्यों क्यों बोलना है आपको? तभी तो कह रहा हूँ मैं आपको, देखो मैं आप लोगों के पॉइंट समझ रहा हूँ, आई नो सबका है, और बहुत पॉइंट सही भी है, वही ना। मोस्टली वी आर, बट वी कांट लाइक इसमें फिर अगर हम उन पे एलिगेशन लगाएंगे, वो हम पे एलिगेशन लगाए, देख लो ना भसड़ होगी। नहीं एलिगेशन की पॉइंट तो बात सर नहीं इतने है, हैं, पॉइंट तो मैं भी एलिगेशन की बहुत बात सारे हाँ बोल देखो, देता हूँ। हमने एलिगेशन नहीं लगाया, बट उनको लग रहा है ना हम एलिगेशन लगा रहे हैं। देख रहा राणा सर, दैट्स अ राणा सर हो कम्युनिकेशन, गए टू वे हाइपर। कम्युनिकेशन थी, तो मैं पर उसको उनको लगा कि एक्सप्लेन किया allegation। ना, कि जज को एक्सप्लेन किया ना, आई जस्ट वांट टू बी ऑन अ प्लेन ग्राउंड वेयर आई। आवाज गई तुम्हारी। पानी पियो। पानी पियो कर दो सर। भाई मैं मेरी कह रहा आवाज आ हूँ रही है? अब आ रही है, अब नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ पॉइंट तो हमारे पास भी बहुत सारे थे, लेकिन द आजा सीन उधर, था आजा कि उधर, आजा वी उधर, हैव आजा। टू लाइक कंट्रोल आवर इमोशन एंड हाँ वही एग्जैक्टली ना, वही मेरे पास भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वही सबके पास है, वो तो एज एन एजेंट सबको पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं क्या ground चल भाई पे। रहा है, लेकिन कि एक हाउ पॉइंट वी पे आर सपोर्ट करो प्रोग्रेसिंग। ना भाई, कि वो बायस वाले सीन पे। नहीं कहना है ना उस चीज, अभी उस चीज पे बात ही नहीं है। अबे They are hired by the judge. Simple, mature कुछ नहीं thing. कर सकते। Yes. Or if you इसलिए question जो them, है तो हमें judge एक्सेप्ट will करना पड़ेगा। automatically trigger at that time, and he will say कि वो directly judge पे question है at that time. बट मेरे पास, मैं तो उसको वही कहा ना कि मेरे पास प्रूफ भी है, मैं तेरे क्वेश्चन को ट्रिगर करने के लिए। मैं तो प्रूफ भी दे रहा हूँ ना उसको कि क्यों तेरी पीडी, क्योंकि रॉबर्ट भी बैठा है वहाँ पे, राणा ही बैठा है, और दोनों के ऑर्डर्स थे उस टाइम पे। That's the thing. अगर तुम proof दोगे तो conflict ही पैदा करेगा वहाँ पे at that time. हाँ, और देखो उसके लिए मैं अगर तुम्हारे पास proof है, so you can case a different case. समझ रहे हो? You can file a different. क्या हो गया? जब उसका बॉडी कैम रेडी रखना राणा का, जो बोला वो। अरे छोड़ना भी, रहने दे। अरे नहीं All the officer come here. We are talking something. 10-4. अरे कहाँ पे? Outside ये hall में आओ। वहीं आओ जहाँ पे थे हम अभी, सब वहीं पे।
भाई मैं शांत बैठा हूँ, तुम लोग पता नहीं क्यों उठ रहे हो भाई। वही दैट व्हाट आई एम सेइंग। हमें भी पता है भाई क्या हुआ है। उनकी देखो, उनकी वर्डिंग स्लो और उन्हीं को तोड़ो वहीं पर, जैसे उसने बोला करेक्ट। रिपोर्ट, तो भाई मैंने कहा हाँ भाई क्या भाई बजे रहे हो तुम? उसको भाई उस बात वन पे बोला भी वर्सेस ना एट कि हो वो रहे हैं अंदर वो भी नहीं, उसने बोला ना कि राणा को सस्पेंड करूंगा। अबे तो पूरा पीडी नहीं कर रहा, तो पूरा डीए कैसे करेगा सस्पेंड हमारी एक बात पे? बात तो सही है, बात तो सही है, बात तो हाँ सही है। बात तो आप सही है। लोगों की सही है, बट फिर वो सिचुएशन देख लो ना कोई कैसे नहीं हो रही है कोई नहीं राणा कोई नहीं कोई नहीं, देखो नेगेटिव वे जज में हो रही है। जज को लेने दो डिसीजन। अभी आप लोगों ने बहुत कुछ चीजें बोल दिया है, ठीक हाँ, है, इट्स फाइन। चिल आउट, जस्ट कूल डाउन, कोई दिक्कत यस, नहीं, देख अब लेंगे। व्हाटएवर हम द चुप रहते हैं। डिसीजन है, करवाओ भाई, लेट्स राणा को या सस्पेंड करवाओ। लेट्स गेट द डिसीजन। लेट्स गेट द डिसीजन, लेट्स डिसीजन रेडी के फॉर बाद द देखते डिसीजन, हैं क्या लेट्स गो करना है। वाओ होप फॉर द बेस्ट डिसीजन के बाद गाइस। देखते हैं गाइस। सुनो, वाओ अगर वाओ। डीए डीए डिसीजन के बाद देखते हैं ठेली कहाँ लगानी है। वी गो डाउन टुगेदर गाइस। तेली कहाँ लगानी है ये भी पीढ़ी सही की है। पीढ़ी की क्या पीढ़ी बोला? और आइदर प्रशांत इज द चीफ। लेट्स गो। पीडी के सामने लगाऊंगा हॉट डॉग की ठेली। बात तो सही। क्या बोला है? जज के सामने दूंगा रिजाइन, बताओ अगर प्रशांत चीफ बना। मैं भाई नहीं हो तो फिर मैं तो ऑफिसर्स को कमांड मत दिया करो, ठीक है? भाई मैं तो खुदाई कमांड वालों के भरोसे चल रहा हूँ। वो बोल दे कल मैं खुद रेडी लगा दूं बाहर। वो डीओसी ला देते तो। हैं? अच्छा बैकअप रख के बैठे तुम लोग। बैकअप ने बहुत है भाई। आपकी ऐसी कुछ ज्यादा तो नहीं भाई लग निकल रहा रही है है विजय रॉक सर। भाई से घर वर खरीद लेंगे कुछ। बहुत बैकअप है हमारे पास। अजय सर भाई ना स्विमिंग पूल में चिल करने दूंगा मैं। सपोर्ट, फुल सपोर्ट पानी भाई, दीजिए फुल अजय सपोर्ट। सर। फुल सपोर्ट। जो भी गेस्ट देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। स्वाट एक्स आज डीई फुल ऑन टॉप स्वाट होगा एक्स भाई। डीई। या Okay, डीए go back रहेगा to या your डीए positions. नहीं रहेगा। आ गया क्या? Yes, sir. Yeah. Please get back to your positions. Units please assemble back in the court please. 10-4. Ask them to get back to their normal positions. हेलो बैठ जाओ DEA तुम, बैठ units please be back अरे, in the court ASAP. जाओ। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। Get seated. बैठ जाओ प्रोफेसर। Okay. अरे प्रोफेसर जी बैठ जाइए। Where are the rest of the kids? अरे बाप रे, निकल गई। चलें? घर निकल गई थी गलती से। ओ यार Dispatch, who's the master? हाथ ऊपर करो। गया खत्म। बैठ जाओ प्रोफेसर। Okay, I guess everyone is able to hear me. यस सर। बैठ जा। Perfect. Basis the evidences which were hardly showcased to me, basis any proofs which were hardly showcased to me, basis only and only things that you guys have said, everyone has said, and what happened today in the courtroom, what I can see is that गया। the DA department is not fit to operate on their own. And that is the reason why I have decided to dissolve the DEA department, because we cannot make further investments in one department which has criminals, ex-criminals, where people from that department have left and joined criminal organizations, where multiple things have happened, and there are constant complaints that, you know, from both the sides. I'm not just saying that DA, that okay, DA did this or PD did that or this happened or that happened and so on. And we do not have the funds, because there are not a lot of taxes that we collect from civilians. We do not have the funds to run a department, let a department run solely. So DEA department will be dissolved. Anyone who has been part of the DEA department, however, you guys can interview for the PD department now. You guys will get a direct interview to the PD department. These guys will be able to take you within PD, and then I think a joint effort towards removing drugs, or at least having a
having an effort which makes a difference towards removing drugs is something that will happen. One person which the PD department has called out, no matter what, they will not even interview and has been blacklisted from the PD department is Officer Abhi Karthos. So, Officer Abhi Karthos, you are suspended from the duties of DEA, which is no department right now officially. Officer Rock, I would request all the DEA officials to hand over their lethals, every single thing to the PD officials today itself in a cordial manner. And PD officials, high command and everyone, I would request you guys to release and share dates with them today itself on the interviews that you can conduct with these guys, on getting them, if you guys feel that they can be in your departments, in CID or in any other department that you'd like, by within a week, those need to be completed. Yes, sir. Sure, sir. And if this is not done, trust me, I'm going to take action against every single one of you guys. It will be done, sir. Yes, sir. Okay. All right. The court is dismissed. Thank you so much. Please hand in your lethals to all the PD officials. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, guys. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. We'll come to DA office, sir. No need. अरे रुक जा भाई, सब लेके जाओ यार। राज सर आप लेंगे क्या? Oh, we'll come there. We'll come there. I don't have नहीं दे दें या space. मतलब पीछे वाले को पकड़ा देते हैं। किसको अभी दे? शॉट वाले। ओके सर। We'll खोल दो take यार it in a दरवाजा। proper manner. हमको records भी maintain करने एक काम करो ना, कहाँ पे दूँ? पीडी आ जाओ, पीडी आके दे दो प्लीज। आप लोग पीडी आ श्योर जाइए। सर, ठीक है। Sure. People from the just give me 1 second. People from Weasel News. Yes, sir. You cannot release anything which is confidential. Yeah, we understand. Only the verdict. I will make sure that Weasel News gets shut down if anything that is confidential gets released. No, sir. Nothing except direct quotes, and the verdict is going to be out. Please do. And Officer Robert is your point of contact. Just show that report to him first, and then only you can release it. Understood. Okay. Thank you so much. Yeah. Thank you. Can you give me a number? Yes, sir. Just can you give me a minute, please? Sure. Tell me. What would be your my chambers. place? Contact me whenever the thing is ready. Huh? What would be your radio place? Because I need to guide the convoy. So do we have something else to do today? We are going back to MRPD to resolve the other issues, Officer Veer. Sure. Okay. So I need to Yeah. inform the. Did you forget? That's fine. No, No, Did you I forget remember that. what we discussed? Yeah. Great. Yeah, Let's go. Okay. Can you open it, Officers, sir? sort of Pause officers, okay, please. हाँ सर। Sir. Details ko. Don't get out till then all the officers not there. Sure thing. Last day of DEA. Can you give me a number we can connect about this? थोड़ा आराम से right now. I know you have. Yep. Yeah, Yellow. just give me your number. मैं आपको contact करूँ. This is my number, Alfred. Alfred. You rock, sir. Uh-huh. Aram, sir. Got it. Thank Oh. you. What about your plans? Are you shifting to the PD? PD? No. I'm not here to give out interview to any of the people. Okay. I'm the person So who Viraj- gets offer from places. Yeah, I know. Yep. So We'll inform you in like 1 मैं hour. किसी को इंटरव्यू देने आने बैठा हूँ. So I said it'll be a private. Sure. सर मैं तो बोलते कोई चलो मतलब वो अल्फ्रेड restaurant ने खोल जो लेते हैं। वर्डिक्ट है कोर्ट का वो डाल दिया है। या
सर रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, चलिए। है पागल हो गया? रेस्टोरेंट खेल लेते हैं पागल हो। और क्या करें? इसको देखो रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। बोलो बोलो। I think it's over तेरा for प्लान now. क्या है अभी? काम अच्छा, वो सब कोर्ट ने डिसाइड कर लिया। चलो डॉक्टर सर, हाँ बताओ। आखिरी बार इस गाड़ी का सफर। अबे ले जाओ भाई गाड़ी चुरा के। ये डीए ऑफिस क्या होता है? आखिरी सफर जज से एक रिक्वेस्ट थी यार, सर वो गाड़ी हमें नहीं मिली, स्कॉर्पियो। एक आखिरी बार स्कॉर्पियो चला के ही जाऊंगा वहाँ की। अरे रे We have to take our like personal belongings from department. Guys, can we inform PD that we need to take our personal belongings वो from the DEA स्कॉर्पियो office? चलानी है भाई मेरे को। Exactly. अरे हमें भी बैठनी है सर, हम भी आएंगे आपके साथ। Let's first of all handle our official armory and lethal weapons to the PD, and then go to the DEA office for the final particulars. Yeah, 10%. We'll go to the PD first, okay, guys? 10 for got it. 10 for sir. Move in a convoy. Don't be away. आपसे एक रिक्वेस्ट थी सर। सर वो 1 मिलियन की जो स्कॉर्पियो थी वो हमें मिली नहीं सर, मतलब वो एक बार अब जा ही रहे, एक बार आखिरी बार चलाने को मिल जाती तो 1 मिलियन। It was just for your chief, and it was said Sir, that so it will only be sanctioned for your chief. अरे यार सर एक बार चलवाने दे देते। Sorry, not possible. लो सर। ये गलत है यार। प्ले लाइक स्टेट के नाम पे चीफ पीडी ने गाड़ी ऑफिसर दे दी मनी और सर। उसके अरे बाद हमें चलाने को नहीं नहीं, अगर हमारे सीनियर ऑफिसर अगर पीडी ज्वाइन नहीं कर रहे अरे यार। तो मैं पीडी में जाके क्या करूंगा ब्रो? रॉकेट जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इसको हटाना जल्दी। Rock, what is your rank? जल्दी जल्दी जल्दी। Who mine? हाँ। I already got an offer from somewhere else as a chief, so yeah, I'm still a अच्छा। chief. But अच्छा, from where? From where? From where? from the city of ये क्या We're gonna कहते be हैं at the Liberty PD City. first department. I think so. क्या करना है सर? आप पीडी ज्वाइन कर रहे हैं Park the vehicles outside, Ranji. Outside. मैं तो वीकेंड लाइन की सोच रहा था, यही लगाते हो। मैं तो आगे लग गया वीडियो डिजाइन। हाँ तो आप जहाँ पे होगे मैं वहीं पे रहूँगा सर। मैं आपके मतलब आप ओए मेरी राम। इंस्पिरेशन थे सर। मैं इंस्पिरेशन। हाँ अब आप ही जो डिपार्टमेंट में होगे वहीं पे मैं रहूँगा सर। यस सर। Yes, yes. Oh, thank you. चलिए कोई नहीं सर। चल पीडी पे जाना है ना सर सबसे पहले। प्रशांत सर का कॉल था पीडी कि को बुलाया है, किधर बुलाया है? नहीं पीडी मतलब एमआरपीडी जाके हमें मतलब Oh, yes, yes, yes. अरे लो भाई खत्म हो गया भाई, हक दिया भाई मेरा। From the court. चलो चलो हो गया सही हो गया। जो भी गाइस देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। एक काम करते हैं, डीए ऑफिस की चाबी तो होंगी उनके पास, आ जाओ बैठ जाओ। कॉल दे दूं सर रेडियो पे? हाँ दे दो। बट प्रशांत सर तो अंदर भी एक चले काम गए। करते, अरे कोई नहीं, डीए ऑफिस पे सामान छोड़ के जाते हैं। फिर वो बोले कि प्रूफ नहीं है, तो फिर क्या प्रूफ नहीं है? क्या आपने मतलब सामान रखा है, मतलब आपकी गन? अरे मैच है भाई इनका, खुद चेक करेंगे। एक बार सर पूरा डीए मतलब घूमना है आपके साथ अंदर ऑफिस में। मेरे साथ आपको घूमना है? सर, क्या पूरा हो डीए गया? ऑफिस क्या करोगे तुम घूम के? लास्ट क्या बोले सर अब? क्या वो यादें रहेगी सर? चलिए सर,
बहुत याद आएगा यहाँ। अरे सर वो मैंने मेल किया था उसका आपने कुछ हाँ पानी पीजिए, गला सूख गया आपका। अरे एक मिनट देखता हूँ तुम्हारा वेब। जी सर। हाँ आवाज चली गया। पानी। हाँ बताओ। डेनी भाई 1 मिनट में थोड़ी देर में बात करता हूँ आपसे, 2 मिनट में। ओके ओके ठीक है मेरे कॉल करना। हाँ ठीक है पक्का। ठीक है। अरे वो आज तो मतलब आया था ना सर वो पूरा अनाउंस कि सबको मतलब पे वो पेमेंट देके मतलब पूरा वापस करना पड़ेगा प्रोसेस। क्या पेमेंट देके? अबे तुम वो कुछ नहीं करना है तुम्हें, कुछ नहीं करना है तुम्हें। अच्छा हाँ अच्छा मतलब मुझे तो लगा कि Can we give वीजा a call रिन्यू to करना PD है हमें। ASAP? नहीं कुछ नहीं कर। No require. अरे ऐसा कुछ करना हो No, तो no जल्दी one से gives the सर, call हमें to तो भाई PD. पैसे They भी are नहीं है busy हमारे with पास। that once they are हैं पैसे नहीं तुम्हारे पे? हाँ वो पैसे नहीं। 999 का कुछ करना पड़ेगा ना सर। अरे जो भी too late है बात वो रहे मेरे को दे हैं, दो तुम अपना ज्यादा रो पैसा मत। and I अरे just, अच्छा थैंक यू। हाँ I think we should leave for DA office first and park our vehicle. Yes, yes. हाँ वो मैं अपना पर्सनल स्ट्रेस एकदम कम से कम गैराजेस में डाल तो दे। मेरी बाइक तो यहीं डीए के ऊपर खड़ी है। हमारी जॉब्स अभी नहीं लिए guys, we have a time for that. ठीक है? We have some time period. So सर गन रख दो ना अब take तो। care about that. क्या कह रहे हो? दोनों हाँ गन्स गन रख दो रखो ना, भाई, सब कुछ रख दो। रख दो। बाय बाय गन्स। G17 SMG बाय बाय। Direct to Ajay sir, get back at the vehicle. Let's go to the office ASAP, guys. This is 376 to the 19 for the last time. Traffic. आप क्यों रिपेयर करा रहे? टूटी फूटी व्हीकल रखो इनके पास। तो सर से अरे एक रिक्वेस्ट है। at least these ये कौन है vehicles भाई? have no तुम्हारा साथ दिया है बहुत, तो इनकी रिस्पेक्ट करो। अभी सर एक रिक्वेस्ट है। 19 will be now पर्सनल रेडियो, जो कॉल देनी है तो। सर मैं कैमरा रख लूँ सर, अच्छा लगा है।
Lethal drop is Listen, guys, always be grateful for whatever experience you had in your life. ठीक है? This is my personal thing for you guys. Even though the ending is not good, the start wasn't that bad and the journey wasn't that bad. Let's meet at the meeting when we can talk about all the things. बोलो भाई। हाँ? Sahil, यार I sorry for don't know missed. about that for sure. और अभी के लिए तो I thank you don't so know much about Sahil. that. अरे कैमरा sorry रख मैं सकते क्या? तुम्हें रिप्लाई नहीं दे पाया, थोड़ा इमोशन में कंट्रोल नहीं हो पाया। देना किसको है वैसे, ये बताओ। I don't know dude. यहाँ बहुत कुछ है, इसके लिए पीडी को यहाँ आना पड़ेगा जो हमारे पास है फॉर द लास्ट टाइम। पीडी को यहाँ आना पड़ेगा उसके लिए। अरे forget about Thank it you, sir, Prashant, हमको sir. I'll be अपना coming lethal in वगैरह 5 देना है। minutes. To अरे the office. लीथल्स देना है, बस दे दो राके। हाँ वही। लीथल इसमें बहुत पड़ा है मेरे पास। I can't carry that much. बैग लेने पड़ेंगे उसके लिए। स्टेज तो थोड़ी स्टेज तो वो खुद देख लेंगे ना, आपके पास जो वो दे देते। वही अपना बस अच्छा मेरे lethal पास दो जो जो थे आपके पास। हाँ हाँ स्टेज वो खुद देख लेंगे। I heard that call 10-4 with. सर कफ रख दे रहे हैं। हाँ हाँ सब जाएगा। सर मेरा कैमरा देने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं। Direct to Prashant, sir. 10-4 send it. I'll come in 10 minutes. I'll speak with Robert. 10-4 no issues, no issues, no issues. लगता है फिर से फिशिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। जाओ टैक्सी जॉब करो अपनी चटको। अरे फिर से फिशिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। हाँ अजय भाई, अजय सर आप आओगे? नंबर दे दीजिए एक बार आप सब। देंगे देंगे अभी सब हैं, फिर थोड़ा बातचीत करते हैं फिर करते हैं। कोई नहीं कोई नहीं। सर हाँ हाँ एक रिक्वेस्ट है। बताओ बताओ। कैमरा रखो क्या? अरे नहीं मत रखो यार, फिर बोलेंगे। कैमरा में क्या है सर? अरे देख लो तुम। और आईफेक्स भी रख दिए सर मैंने तो। आईफेक कहाँ रखे? मतलब यहाँ पे जो लॉकर है वहाँ पे यूज कर लो क्या? लॉकर मत करो, पीडी को दे दो मेरे ख्याल से तो। मतलब रॉक सर ने तो बोला कि सब लॉकर में रख दो। लॉकर में रख दे? Without my personal vehicle. तो लॉकर में रख देते हैं। मैंने तो सब लॉकर में रख दिए, एसएमजी वगैरह सब कुछ। कल से क्या करने वाले हो आप? कुछ प्रशांत सर एक काम करते, मैं तो बोल रहा हूँ कि रेडी लगा देते पीडी के सामने, खाना पीना बेचेंगे। हालत देख पानी ये पीजिए। रेडियो भी चला जाएगा क्या? अपना एनडी ना बाद में यूज कर। हाँ रेडियो रख दो सब रख दो। पीडी का है ना? नहीं सर रेडियो तो नहीं मेरा मैंने खरीदा था भाई। मैंने खरीदा था क्या कुछ भी। अच्छा रेडियो अपना है तो रेडियो रख लेते हैं। और कफ भी ये पीडी के हैं। क्या मैं क्या कह रहा हूँ, फीडबैक उठा ले भाई, बेचेंगे पैसे ही हाँ एक काम करते हैं सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, सारे जॉइंट्स उठा लेने क्या बेचते मारेंगे पैसे हाँ नितेश सारे लौंडे कहाँ चले? निकालो चलता है उसमें क्या है, कुछ और नया ट्राई करेंगे हम। अबे हाँ डीए बैज रखना था, भूल गया। लव यू डीए बैज, मिस करूंगा तुम्हें। दिस इज इमोशनल पार्ट। नहीं मैं डीए बैज तो मैं अपने सीनियर को ही दूंगा, कुछ भी हो जाए। डीए बैज में ऐसा नहीं रखूंगा। अरे मैं सब हैंड ओवर करूंगा। लास्ट टाइम इन द मीटिंग रूम। हां तुम लोग किधर चले बैग वो लेके? 10 ऑन द लास्ट कॉल सर। 25 एंड मीटिंग रूम। मैं तो कह रहा हूं बढ़िया कोई गैंग जॉइन करते हैं, खुद की गैंग बना लेते हैं, हर इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। चलो आई एम डन रॉक आ रहा होगा। अरे सुनो, आई एम आल्सो डन ना। अरे रॉक सर कहाँ है? इधर तो नहीं आ रहा वापसी में। रॉक सर आ रहे हैं बोल रहा था यार। अरे मैं बेज ऐसे मतलब इसमें नहीं रखूंगा। ये मेरे ऑफिसर ने मुझे मतलब रिस्पेक्ट के साथ मेरे हाथों में दिया था, तो मैं उनके हाथों में ही दूंगा। आतिफ सर मैं आपको आइए मैं आपको देता हूँ बैज। आपने ही मुझे दिया था बैज, तो मैं आपको ही दूंगा। अरे मैंने कब दिया था बैच? अच्छा ठीक है लो यार। अरे लीजिए ना सर प्लीज। मैंने तो उसमें रख दिया सर सब कुछ अपना स्टैश वगैरह में। जो नौकरी चला गया है बट बैज आपको रिस्पेक्ट के साथ दे रहा हूँ सर।
आज इट वाज अ वेरी हाँ बहुत याद आएगी अच्छा एक अतीक काम सर करते हैं आपकी। गाइस सब लोग एक बार आखिरी बार मीटिंग रूम में आ जाओ अगर यही सीन है तो अरे सर हाँ सर हाँ आपका बुला नंबर लो मिलेगा सबको मान अतीक सर? आप Every unit available right now in the meeting room, please. अतीक सर नंबर लेके खड़े होगा क्या वो एक्टिव रहेगा ही नहीं मुझसे बात ही नहीं हो पाएगी अच्छा हाँ हाँ एक काम करो टेक माई ईमेल एंड लॉ वाले पे हो ना तुम हम्म। हाँ मैं ईमेल करता हूँ तुम्हें वहां से उठा के ईमेल तुम्हारा ओके ओके अभी सर वेयर आर यू? कीजिए सर लीथल्स देने मेरे को आप ले लो मेरे लव यू गाइस अरे रुको रुको सबको आने दो देन वी जो भी guys देख रहे हैं, like and start subscribe this कीजिए दोस्तों। last meeting of DEA. Can someone call Rox? मैंने कर दिया आ रहे हो यस सर आ रहे हो मेरी बात होगी दंगा होने का थोड़ी वो हाँ तू गैंग साइन कर ले यहाँ पे बहुत सही सर डिपार्टमेंट बंद हुआ है पर हम मिलकर कुछ कर सकते हैं ना साथ में नहीं कहाँ मिलके। क्या कह रहा है बिंकी गैंग खोल ले क्या नहीं चलो सर, चारों गैंग वाली सुपरवाइजिंग बात स्पेशल छोड़ने दो। एजेंट्स और एक सीनियर सुपरवाइजिंग स्पेशल एजेंट प्रशांत फॉर द चीफ चलते हैं सर चलो 42 चला जा बॉस सही की मैं तो ऑन ड्यूटी रहूंगा कहाँ है मेरा एमडीटी रुको है आतिफ सर आप अभी आगे हाँ पूरे तो सीन से सब एजेंट्स आ गए सब एजेंट्स हो गए हाँ और कोई है आगे आखिरी टाइम सैलरी ले लो रॉक सर को आराम आखिरी सैलरी ले लो आतिफ सर आखिरी सैलरी दे दो एक्सपी दे दो हटो हटो एक्सपी हो जाए रॉक सर हटो फिर हम हटो सब हटो देंगे ओए आ ही नहीं रहते मना कर देते माने आने के लिए, पानी दियो जबरदस्ती बुलाए ने हाँ जबरदस्त सर स्पीच तो बनती है एक Yes. मैं बैठ गया पर So guys, whatever the thing happened, it was unexpected. But anyways, like we have to move on, accept our mistakes, अच्छा accept the mistake. हाँ You उनकी trusted. गलतियां भी मान लेते हैं कोई नहीं वो बायस थे नहीं कोई नहीं बात नहीं guys। कंप्लीट करने दो तो सारे पीडी के हाई कमांड से ले लिए चैट क्योंकि बच्चे तो सारे पीडी के हाई कमांड से ले लिए क्यों गाइस हाँ सही बात तुम सो देखिए अभी आपके पीछे एक टीवी है यहाँ पे यहाँ पे शांत भी रहो कुछ तुम वीडियोस बनेंगे शांत हो जाओ guys। सबसे आगाज तुम ही हो हाँ कार्तोस ओ Yes. कार्टून इज ब्लैक लिस्टेड Yes. ब्रीफ तो दिया नहीं दो अलग अलग सीन है हमारे लिए
डिपार्टमेंट थे वो अरे बंदे गए, आतिफ इनके सर लिए बस आपने फायर मुझे हुए पहले ये। मैसेज नहीं किया। इनको पहले फायर किया। आतिफ सर सस्पेंड किया वे फायर में। एक ही बात है। ब्लैकलिस्ट किया भाई। अब ये मत बोलना कि Blacklist किया टेररिस्ट कोई अब वाला तुम बीडी में भी नहीं जा सकोगे वैसे, और जाना भी नहीं अच्छा है। चलो एक सेकंड ना, एक एक सेकंड ना कॉल भाई करता हूँ, बोल देता हूँ बंदे आ रहे हैं हेलो उनको संभाल हेलो लो। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही बनेगा है। बस। आ रही है। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा था कि गाइस, यार माँ की कौन कॉल पे कॉल। यस यस I know your capabilities. You will excel in future, but it's totally up to you whether you want to join PD department or not. I don't mind, but guys, I just want to make out one statement to you. कि if you are expecting me to join PD department, it won't be a possibility because I am the one who take interviews, not give interviews. Exactly. Same. Yeah. So that's all, guys. I hope you would have a bright future. And tata, sayonara. पॉलिटिक्स ट्राई करी Bye. है आपने कभी? अरे सायोनारा यार, मेरा डायलॉग है। हेलो गलत बात है, चुरा लिया। अरे दरवाजा खोलो बे। नौकरी छीन ली क्या? किसी के वही पास तो बैच नहीं नहीं भाई, है मैं भाई। ऐसे अभी पब्लिक डिफेंडर। अरे आतिफ सर क्या मैं उधर से भी रिजाइन दे रहा सर सामान किसको देना बता अरे दो आतिफ सर मेरे को जाना है फिर। हूँ। हाँ भाई बताओ। ले जाओ ले जाओ। अरे आपका मैसेज नहीं आया था। अरे जैसे कि हमारे पुराने चीफ कहते थे, मेरा कद्दू करे पीडी में नौकरी। अरे नहीं नहीं, अभी आ रहे हैं वो, पीडी आई है, उसको सामान दे दो। मैंने दे दिया। ले ले ले। गाड़ी में रख देना। सब पहले स्पीच बाजी हो जाती है, फिर उसके बाद पीडी को दे। अरे हमने लॉकर में रख दिया सब, देते हैं सर। आप चेक कर सकते हो। अलग से थोड़ा जल्दी ले लो, मेरे को जाना है। ये लो। हाँ जी दे रहा हूँ बस। हाँ जिसको जल्दी है जल्दी कर लो फटाफट, पहले लाइन बना लो गाइस। मैंने तो रख दिया वैसे भी। मैं दे दूं? हाँ दे दो। सर आर्मर बचे हैं। आर्मर बचे हैं? आर्मर रख लो। टेजर दे दो, गन एंड सब दे दिया सर। Am I 10 to dispatch? ओके थैंक यू। आप सर्च करना है आपको? ना इट्स ओके। ओके 602 1042 फॉरएवर। भाई perfect 20 605 forever. going 42 Hope we forever. meet Thank you, somewhere for your else service. again and thank you lot. बहुत अच्छा Thank लगा you आपको। guys. It was a short journey. एक साथ दो कॉल, किसी को भी दोनों की बात समझना है। अरे नहीं बोलो। अरे सब लोग आ जाओ, एक मीटअप करते हैं भाई, मीटअप जो है। जितनों का भी equipment है ना पहले। हाँ मैं दे दिया सर।
पीडी में आके दे दे। ओह सस्टेंड डेट बताओ मेरे तो ले ही नहीं रहे। ठीक है मैं रख अरे लेता हूँ आतिफ इनको। सर Guys, please submit your DEA badges and stuff to the PD officials waiting outside the DEA office. यार 10-4 भी यार अपनी गाड़ियाँ निकाल लो, आ जाओ। सब लोग निकल तो हैंड कर सकते हैं। सैल्यूट कैसे करते हैं भाई? Yeah. टू डिस्पैच स्टैंडर्ड। अरे भाई कोई सुन क्यों नहीं रहा मेरी? क्या हो गया? अब सुनाओ। मैं कह रहा हूँ सब लोग चले गए। नहीं डीए के बाहर ही करा दो। लास्ट कॉल देनी है अभी या नहीं? दे दो लास्ट कॉल। रुक जाओ। So guys, I am in the waiting room of the DEA office. This is where I first came रेडी? as an क्या informant पीडी with इंटरव्यू दी? 35 नहीं नहीं keys नहीं ब्रो, to Diana अगर Reed मेरे now. सीनियर नहीं रुक दे जाओ रहे भैया, तो रुक मैं जाओ, नहीं बाद दे में सुनाना पाऊंगा। कहानी, रुक जाओ। Dispatch, this is going to be 300. Show me The last 42 for the last DEA time in the time. DEA department. Thank you for your service. 303 showing 42 for the fucking final last time. 506, 42 for the last time. Thank you for your service. 520 it was an Special Agent Bittu Rana. guys 520 it was a short journey with you guys and I have learned many things. I hope Bye forever DA. I hope you guys By the way, will thank meet you so in much future for joining for DEA. sure. And अरे DA क्या? thanks Sorry. DEA office and Prashant अबे sir, thank you so Rock sir much for for giving me joining an my stream. opportunity Ready? to add an Love you objective to bro. my career. And yeah, that's it. 520 Love you forever DEA. in DA department. I will miss. Thank you. 10-4, thank you for your service. Traffic. बहुत याद आएगी भाई DEA. This is So Supervisor thank you Special DA Senior for Thank you giving so me a much. great opportunity Thank and you guys for objective to your my time, career for your and efforts. understand my You what guys is are PEA. amazing. And Thank you. yes, best of luck for your future. Just give your best wherever अरे you are. यार और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ काम बहुत। करके। मिलते हैं कभी कहीं और किसी और जगह। And for Once sure again, a thank big you. thanks, a very big thanks to Bittu Rana ji, Diana ma'am, Cypher sir, Jareen sir, Gul Khan sir, each Yes. and every person who was there with me from the start. DEA has day. been a big thing to me and I'll never forget this family. Love you DEA. Same traffic. 10-4, same traffic. Nice to work you all. And let me clarify, success में full stops नहीं होता है, commas ही होता है. So if you guys want a success, better you know what to do. And carry on with your life. Be in touch. That's it. सर एक लास्ट टाइम सैल्यूट करना चाहता हूँ सर सीनियर ऑफिसर को। गाइस एक चीज मैं बोलना चाहूँगा, ठीक है? If your services are required again, you will be contacted. So hope for the best. 10-4 अभी कर दो sir. 10-4 अभी. Thank you. मैं लास्ट टाइम I hope we maintain this सैल्यूट relation करना in चाहता the हूँ same सीनियर way. ऑफिसर को। Thank you Manya for the salute. अरे थैंक यू सर। I'll be back after a code zero dispatch. 10-4 442 for the last time. 605-42 last time. 10-4. Thank you everyone. Thank you so much for your efforts and time. And जो आज नहीं हमारे साथ, of course, जो प्रसाद ने mention किया, that was really so sweet. Cypher sir, Gul sir, और अपने जरीन सर, डायना जी, मलिका जी, huge shout out to all these प्रधान जी, इन सब ने डिपार्टमेंट को आज जहाँ पे है मदद करी, और of course you guys are amazing. Thank you so much. Thank you so much, sir. चलो भाई बालास के उठ चलते हैं, चिल करते हैं, चलो भाई. मैं तो वही जा रहा हूँ, exactly वही जा रहा हूँ. आ जाओ मेरी गाड़ी में, आ रहा है किसी को, आ जाओ. नहीं मैं आता हूँ, रुको मैं आता हूँ, रुको. I can't understand you guys go.
एक बार तो रिपेयर करवाएंगे भाई, लास्ट टाइम। क्या नहीं वन सर वेट करना है कि बेटा 10-4 बाय DEA मैकेनिक्स, बाय। in the bike. It's me. ये कितने की पड़ी अरे गाड़ी? मुझे ये पीडी छोड़ना है। आ जाओ। एक मिनट में वो कर लो। ये मन्या के साथ बैठ जाओ। कितने की पड़ी पता? प्रोफेसर क्या नहीं आप क्या जो पीडी भी आ गैस रहे देख हैं रहे क्या? हैं सोच रहा हूँ, देखता हूँ अभी। मैं तो जा रहा हूँ पीडी because I don't want to stop my career. There are a lot of departments and my motto is to serve people and serve nation. So anywhere I can do it. अभी दे दोगे क्या? अजय सर मेरे अभी लिए वेट नहीं करो, मैं अभी आ रहा हूँ। yes we chilling today and maybe रॉबर्ट को मैंने मैसेज किया है। अजय When you are सर free, बट आप रॉक सर को message me. मिस नहीं करोगे क्या? रॉक सर को They are in a meeting मेरी आवाज आ रही actually. रेडियो So पे? after the meeting, अभी मत जाओ पीडी अभी मत जाओ। तुमने बोला ना। वो कहाँ हो? हाँ थोड़ा चिलिंग करते हैं पिज़्ज़ेरिया या उधर लेके कहाँ वो सब कहाँ जा रहे हैं? देखिए पूछो, कॉल दो। We are just 76 to one place, then we'll come back. Which place? अरे प्लेस बोलो। डायरेक्ट टू अजय सर मेरे को भी जाना था वो प्लेस में, मेरे को भी लेके बोलो तो चलो। डायरेक्ट टू आतिफ सर। सुट बाला सुट जाओ, बाला सुट भाई की चीज। बाला सुट यार बालासूट जाना है क्या? सब लोग बालासूट जा रहे हैं। या ओके बाय DEA लास्ट। बहुत इमोशनल फीलिंग थी यार DEA के साथ। गलत हो गया यार। मैं रॉबर्ट को DM किया है, आई मीन मैसेज किया। Let's check. I'll get into BCSO department maybe. अरे तुम्हारा नंबर दे दो। अच्छा आप ही हो ना, विजय हो ना आपका नाम? हाँ विजय। अच्छा आपका नंबर तो है, ठीक। वो विक्रम आदित्य आप ही ना? हाँ नहीं है। ठीक है। चलिए अब बालासूट। चलो एक बार लास्ट वीक दे देते हैं। थैंक यू DEA। इनके साथ भी मिल लेते हैं ना लास्ट टाइम। मैं तो बोल रहा हूँ सबसे मिलना है सारी गैंग। डायरेक्ट नहीं जाते अंदर। हाँ ठीक है। बस डायरेक्ट जाते हैं भाई, DEA नहीं है भैया। रुक जा। मत जा। अरे नहीं चलो उसमें क्या है? रुको। अरे चलो भाई। I can't listen. I'm going for the cop. I'm going for the cop. क्या? I'm going for the cop. I can't. तुम कहाँ कोप हो? I am going for the cop, right? I can't. बट अभी तो नहीं हो ना, चलो उसमें क्या है? नहीं I can't. अरे चलो कोई नहीं। ऐसा नहीं कर सकता। एक मेरा फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं करता। Hello, anyone there on the radio? हाँ टेंशन। Yes. Can someone drop me to the Pond Cafe, please? I'll be needing help. VLT. Yeah, send. मार्क करो उसको, मार्क करो। Where are you guys? I'm at the grocery. Near the grocery. 10-4 मेरे को सामने लोग मिल रहे हैं। So I just go to your office. Come there. I got Bittu ji. Okay. जो भी गाइस देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। लास्ट DEA ऑफिस टाइम। कहाँ पे जाना है बोलो? Guys, where can we meet and chill out for a piece of time? अरे कहाँ पे जाना है बोलो तो सही। DEA office. DEA ऑफिस? Yeah, I mean the ex-DEA office.
जंप का डायरेक्ट टू प्रशांत सर 10-4 send it 25 है टू वो कैफे ना I'll be 25 to cafe when I have a 91 एक काम करता हूँ मैं 1 मिनट मैं अपना एक काम करता हूँ कि वहाँ पे आपको अपनी गाड़ी देता हूँ वो गाड़ी को ट्राई कर लो आप लोग तक एंड देन स्टोर इट इन द गैराज ओके एंड I'll be sending it अरे कोई रेडियो का फ्रीक्वेंसी दूसरा बता दीजिए। अरे प्रशांत सर। हाँ जी। अरे आप तो मतलब दूसरा मतलब रेडियो का फ्रीक्वेंसी हमें बता मेरा अभी दीजिए। कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, अभी मैं सब कुछ सोच रहा हूँ। यू नो जैसे आप थिंकिंग में ना, रेडियो तो दूसरा ही होगा, अपना ये नहीं होगा, इंक्रिप्टेड रेडियो हमारे पास नहीं रहेगा। कल जॉब्स चली जाएंगी। वही ना। द जॉब्स विल बी गॉन टुमारो। वही ना सर। तो एक बार मीटिंग करके देखते हैं कौन सा रेडियो रखना है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो पर्सनली कांटेक्ट कर लेना नंबर से। नंबर आपका नंबर तो है मेरे पास। हाँ विजय आ गए तुम? गाड़ी है? हाँ है मान्या के पास। 20 गाइस चलिए। वो के पे 99 पे 2 पे पिक्चर 10 ऑन दैट प्रशांत सर को वहीं भेजो रखो मुझे गाड़ी देनी है उनको अपनी। अरे है गाड़ी है वी आर final 99 at Wu Cafe I'll be getting my vehicle to Wu Cafe guys code 100 boys code 100 at code 100 shut the fuck up मैं जो क्या कोड 100 सिविलियन हो चूती आज तो सबको फ्री सर्विस मिल रही है। चलो जरा वो चलना पॉइंट कैफे चलना। अरे पॉइंट कैफे क्यों जा रहे हैं? गाड़ी पड़ी है वहाँ पे। क्यों अरे क्यों दे रहे हो? मैंने क्यों बोला तुम्हें? चुप रहो ना। क्यों पॉइंट कैफे का बोल रहा हूँ? रीजन तो होगा। ये बंदूक कहाँ खरीद सकते हैं? अरे सर आपने मुझे सुनो बंदूक कहाँ खरीद सकते हैं? चलो चटको सीधा जाओ वहाँ पर एमिनेशन लॉयर को कांटेक्ट करो। एमिनेशन बदला है मेरे उसके लिए वो पास। चाहिए होगा एनओसी 10-4 ऑन दैट एनओसी लो पैचो एनओसी आपने पहले मुझे प्रोवाइड करवा दिया होता वेपन लाइसेंस तो अच्छा होता ना। अब फ्री में गाड़ी कैसे रिपेयर कराएंगे? एकदम से बैक लेने किसने? फ्री में गाड़ियाँ रिपेयर नहीं होती हैं साले सिविलियन हो। अभी तो बने सिविलियन। तो गन्स का अरेंज करता हूँ। अरे हाँ करवाओ कुछ। उनको बोलना ज्यादा पैसे नहीं है भाई 200 रुपए आ रहा है। थोड़ा बंदूक का अरेंज कर देगा। आपको नहीं बोल रहे इन दोनों को मुझे 6 बंदूक। हाँ इलीगल है। वो कभी सामान ले लिया आपने? मेरे को नहीं मेरे दोस्तों को। मैं तो बोलता हूँ कि चलो बंदूक कितना चाहिए? मुझे तो एक चाहिए। प्रशांत लीगल या इलीगल? इलीगल विदाउट लाइसेंस कितने चाहिए? कम से कम 11-12 ले आओ, पेमेंट हो जाएगी। हाँ ट्राई करो। मैं कितना बोलता हूँ 1 मिनट। अरे नॉर्मल पिस्टल बंदूक बस लाइक लाइसेंस विदाउट लाइसेंस 76 हाँ लाइसेंस के बिना ही नॉर्मल पिस्टल चलेगा कुछ भी चलेगा। बाकी लोग कहाँ हैं? We'll be 76 in some time guys. अभी कोई से अपार्टमेंट्स पे मैं ये थी व्हीकल्स एसएमसी अपार्टमेंट जा रहे हो सर आप? मैं पूछता हूँ। एसएमजी भाई यहाँ पे कितने हैं एसएमजी कितने? खाना ले लीजिए। एक ही है। अच्छा अब मार्क करो जहाँ पे जाना है। एक मिनट लाइन में रहो। प्रशांत बोलो एसएमजी ये चाहिए? एसएमजी नहीं यार, एसएमजी कौन सा पता नहीं। ओनली पिस्टल है। ओनली पिस्टल्स। ठीक है पिस्टल ट्राई करो DVCs। क्योंकि पीडी वाला भी बिजी है। हमारे को बंदूक चाहिए सेफ्टी के लिए। नहीं रॉक्समिथ अरे रॉक्समिथ है ना भाई। डिस्ट्रिक्ट और नहीं बुला उसको रॉक को। रॉक्समिथ लेफ्ट लाइक अभी चले गए। अभी चले गए अभी चले। ठीक है मैं बोल देता हूँ।
I think he had a code 0. He was in the office and suddenly I could not see him. No radio calls. Mostly a code 0. मार्क कीजिए सर। मार्क कीजिए क्या? अच्छा आपको कहाँ जाना है? यहीं पर बस, यहाँ यहीं रेंटल। यस 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 यस। मेरी एक गाड़ी लेके, नहीं एक गाड़ी क्या, मेरे को एक ही गाड़ी चाहिए बस अपनी। जेस्टर ही काफी है। अरे क्या हो गया? अरे रुक पार्क जाया तो करो। करने दो सर। कोई जरूरत नहीं है, रुक जाया करो। क्या भाई, जल्दी बहुत रहती है सर का। मान्या, लेट्स मीट एट द डीए ऑफिस। मेरे को कुछ सामान देना है पीडी को। 10-4 10-9 आई एम गोइंग टू द डीए ऑफिस फॉर नाउ गाइस। फाइनल लोकेशन कहाँ है जहाँ सब मिलेंगे? फाइनल लोकेशन कौन सी सर? फाइनल लोकेशन क्या रहेगी? फ्रीक्वेंसी अभी रहने दो। फाइनल लोकेशन क्या रहेगी आप लोगों की? वो कैफे? Ignored on the radio it seems. अरे बोलो उनको कौन सी लोकेशन रहेगी फाइनल। हेलो हेलो विजय। अरे विजय, हेलो आवाज आ रही है विजय? प्रशांत सर फाइनल 20 दे दो, कहाँ पे आना है? डीए ऑफिस। अरे हेलो। हाँ हाँ बोलिए। अरे फाइनल लोकेशन कहाँ पे आना है सबको? वो कैफे कह रहे थे आप, वो कैसे आओ? पूछो तो जरा, कॉल दो यार। अरे रेडियो ऑफ था, रुको जरा देखो, बोलो भाई। कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है हमें तो भाई। DEA ऑफिस की तरफ आ रहे सर। अरे पार्किंग में आ जाओ, पार्किंग में सर। हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अरे सर पार्किंग में ले लीजिए, पार्किंग में। ट्रक में बैठोगे तो बैठ जाओ। अरे वहाँ पे गाड़ी है ना मेरी। कहाँ पे छोड़ना है तुमको वहाँ पे? अरे नहीं, यहीं पे गाड़ी खड़ी है, सामने ही है। हाँ तो क्या करें हम? प्रशांत सर बोले कि यहाँ पे मिलना है सबको। उड़ा दे इसको।
हेलो हेलो कौन हो? तुम्हारा बाप रे बोलो। अच्छा कौन हो अच्छा। भाई? एक लात मारे खाने गिरोगे। पीने का दो पहले तुम पहले खाने कौन हो भाई तुम? पीने का मिले तो अरे ये टकला कौन है? अरे वो नहीं, टकला बाइक पे कौन ले है? वो आना, टकला मैं कौन बाद है? में जरूरत पड़ेगी तो। गाड़ी में बैठो सर, देते हैं खाने पीने का। बैठो सर गाड़ी में। डायरेक्टर प्रशांत सर कितनी देर लगाओगे यहाँ पे आने में? ओ बिट्टू सर गाड़ी में बैठो। मैं डी ऑफिस के अंदर अपना सामान अरे खाली इनको करके बैठा लो पीडी ना, को देने कोई जा नहीं। रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? रहने दो ना, ये पे अपने आप निकाल लेंगे, ये हमारा काम थोड़ी है। मैं ही नहीं डी ऑफिसर। अरे निकाल लिए भाई उन्होंने, अभी तो गए ऑफिसर मेरे साथ। हाँ। निकलवा के आया हूँ सारे जरूरी कागजात वगैरह। कागजात नहीं, मैं अपना वो लीटर इग्नोर इट, जो उनका काम है सब निकालेंगे वो लोग आके, हम नहीं। अरे रहने दो सर, वो जो काम हमने करना था वो कर दिया। अब हमारा कोई हमारे लेना पास देना जो नहीं था है। जो था। लाओ, हम अपना स्टैश नहीं कर पा रहे, इनको अपने सामान की पड़ी हुई है। ठीक है बताओ वही सर, आपको खाना चाहिए तो गाड़ी में बैठो। अरे चलो तो सही, कहाँ चलना है बताओ। अरे मैं कह रहा हूँ खाना खुना चाहिए तो बैठो। अरे ले लेंगे यार खाना, आओ। कहाँ पे जाना है बताइए? यो हुआ वो चलो वो आप लोग पहुंचो जहाँ जा रहे हो, मैं वहीं आ जाऊंगा। मेरे को कैसे आ रहे हो? वो कैसे आ जाओ? 10 तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बेंटो बॉक्स ठीक है लो एक, दोस्तों, कल ओपी मिलेंगे। ओपी खाना। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। थोड़ा अरे वैसे गुड नाइट स्पैम कर दीजिए दोस्तों। जो भी लाइक नए आए थे लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइए दोस्तों, और ऐसे ही आप अपना प्यार देते रहिए हमें। तो कल मिलते हैं वापस, देखते हैं कल क्या होगा। अरे सैम भाई नहीं आए क्या आज हमारे व्यू यहाँ पे? नहीं वो चले गए। अच्छा अच्छा छोड़ अच्छा। के कल क्या होगा? नहीं छोड़ के नहीं, अभी सोने गए होंगे ना। यार हमारे साथ जो हो रहा है हमें लग रहा है सब छोड़ के जा रहे हैं। क्या हो गया सर आपके साथ? पूछो मत सर। दारू है आपके पास? गुड नाइट एमएसके। दारू तो नहीं। गुड नाइट एवरीवन। जॉन वर्ड को कॉल लगा था। सीधा मंगवा रहा हूँ उससे। सर ये किसका होता है? इनका है, बिट्टू सर का। बिट्टू सर का। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, बाय। कल मिलते हैं दोस्तों और वापस। बताएं सर क्या चल रहा है आज? आज लास्ट डे था
DEA ड्यूटी का। कोई नहीं, देखते हैं अब कल क्या होगा। देखो तो हमारे पास कम से कम 3-4 मुस्टंडे हैं एकदम सेक्सी बताना सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी। हाँ सिक्योरिटी वगैरह कुछ गार्ड वगैरह की नौकरी तो बताना। लास्ट डे इन DEA ड्यूटी। हुआ तो कुछ नहीं है, बस यही है कि कभी हम दिखते थे किसी यूनिफॉर्म में, आज हम यूनिफॉर्म में नहीं आखिरी हैं। सफर, अब नया सफर शुरू होगा। यस बिल्कुल मान्या भाई है। मान्या भाई कैसे हो? मान्या भाई को बढ़िया। सस्पेंड कर दिया गया। अरे कुछ भी मान्या भाई को धक्के मार के निकाल दिया। अरे अरे नहीं, अरे मत करो मार, तेरी ऐसी अरे नहीं 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 नहीं, लड़ना नहीं, लड़ना नहीं। बनिया मत लड़ो, मत लड़ो। अरे चोट लग जाएगी, मत करो। अरे बैंडेजेस है क्या? हाँ ये लो। तो अब तो आईपेक्स नहीं लगा पाएंगे। ऐसा क्या हो गया? अरे DEA बंद हो गया, क्लोज हो गया। हैं? ये क्यों? किसी को कैसे? कब? रुको बाहर आता हूँ। किसी को बोलने से मना क्या किया। होगा? सुनो, किसी को बोलने से ऊपर आओ, ऊपर आओ, इधर आओ। अरे ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, बाहर चलो। अरे आप तो वही हैं, अकेले में बात करना, अकेले में बात करना, ठीक है? हाँ बाहर 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 करो। क्या हो गया? पर आपको तो चलो न्यूज़ मिली गई। हाँ क्या हुआ? अरे जज ने अनाउंस कर दिया कि अब DEA नहीं रहेगा। वो क्यों? एक मिनट। चलो गाइस, गुड नाइट एवरीवन, कल मिलते हैं फिर से। गुड नाइट एवरीवन।